What we are trying to do is do in 30 years or 40 years what they did in 200 years. The average lower middle class person today in India perhaps has a better quality of life than the French noble in the 18th century. We say per capita, income or GDP of India is $2,500, but Bihar being $700, a dramatic difference. Bihar is probably similar to Sub-Sahara Africa, I think, if I'm not It mistaken. is. And as a democracy, I think we have to expect that we will have 5, 7, 10-year periods where growth will struggle, where we are trying to address the social inequity. The PPP adjustment is perhaps the most realistic measure of quality of life of the citizen. Purchasing power parity adjustment, we are already the third largest economy in the world. I don't think 7% real growth is good enough. It is, I think, a level we can sustain. मेरे हिसाब से थोड़ा ambition और बढ़ाना चाहिए. Neelkanth, welcome back. Thank you for inviting me again. Really looking forward to this. After our last episode, there was enormous feedback from people. I think there's so much interest about India. Everyone's talking about India century, $20 trillion economy and so on. But काफी superficial level पे generally जो media coverage होती है, लोगों को detail में समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है. Like why there is so much excitement about India. GDP 7-8% से क्यों grow हो रही है और क्यों होना चाहिए and so on. So really looking forward to having this in-depth conversation with you. 4 पार्ट सीरीज में करेंगे. पहले लाइक विल जस्ट ब्रेक डाउन जीडीपी, दैट वो जीडीपी क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ कैसे होती है, व्हाट आर द फैक्टर्स एंड सो ऑन. उसके बाद नेक्स्ट द लार्जर जियोपॉलिटिक्स. इफ यू लुक एट लास्ट 12 मंथ्स सब जगह लड़ाई चल रही है. यूएस चाइना सिचुएशन, यूक्रेन सिचुएशन, गाजा सिचुएशन, इंडिया का अपना नेबरिंग स्टेट से सिचुएशन एंड सो ऑन, राइट. तो हाउ डज दैट अफेक्ट इकोनॉमी, विल टॉक अबाउट दैट. Got it. देन दिस होल आइडिया ऑफ जॉब क्रिएशन. इंडिया में ग्रोथ वगैरह सब कुछ हो रही है, इकोनॉमी ग्रो हो रही है, but it seems like most of the opportunity is going to the top strata of society. Yes. Middle India में, lower India में क्या हो रहा है, what are the factors, तो उसके बारे में बात करेंगे. और लास्ट इन जनरल उसी को और ब्रॉडन करके कि इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो सकती है, कि इंडिया को we may become a superpower and developed country and all of that, but if all the benefit goes to top 20-30%. No, it won't even happen that way. See, if you don't have inclusive growth will not sustain. We are a democracy, we are not China. Perfect. तो चौथे एपिसोड में उसके बारे में बात करेंगे. So really looking forward to it. I think you've been studying all this for last 20 years. Are involved in many different roles. You're contributing, to thought process, policy making and so on. So really looking forward to picking you, Neelkanth. Thanks for doing this. Not at all. And I hope that I'm able to do justice to, because these are very important questions. तो इसमें से जितने हद तक समझ पाऊंगा, I'll obviously be. चलिए, तो let's start सबसे पहले कि all of this conversation happens around GDP. Let's break it down. GDP क्या होता है? कौन कैलकुलेट करता है? when we say कि इंडिया इकोनॉमी अभी पिछले 2 महीने में चल रहा था कि शायद 4 ट्रिलियन हो गया है, नहीं हुआ है, 3.5 पे ही है. तो ये सब कैसे होता है? थोड़ा डिटेल में समझाओ कि जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है, कैसे करता है, व्हाट गोज इनटू दिस. You can't manage what you can't measure. Right? अगर आपको ये देखना है, and इस पे डीप डिस्कशन 1930s में शुरू हुआ, जब यूएस की इकॉनमी वो डिप्रेशन में चली गई. तो उस समय जीडीपी नंबर्स तो अब लोगों ने जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद से कैलकुलेट कर लिए हैं, बट वो थोड़ा बैकवर्ड लुकिंग है. द पॉइंट इज कि उसके पहले किसी ने जीडीपी के बारे में सोचा ही नहीं था. किसी ने नंबर पब्लिश किया 2000 साल पहले जीडीपी कितना, इवन नेक्स्ट क्या नंबर था, आपको याद है? अरे वो जीडीपी का ग्रोथ प्रोजेक्ट करते हैं. वो होता क्या है कि रियल ग्रोथ है, नॉमिनल. विल कम टू दैट, राइट. सो द पॉइंट इज, तो उस समय लोगों को लगा कि भाई अगर दिख रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ गई है, लोग इतनी बुरी हालत में हैं, इफ यू रीड वो जो रेप्स ऑफ ग्रॉथ टाइप का, मतलब ये तो ग्रेप्स ऑफ ग्रॉथ जो किताब थी, मतलब इट इज डैमिंग एंड वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स. तो इकॉनमी को कैसे मैनेज करें, बट मैनेज करना है तो उसके पहले मेजर करना पड़ेगा. तो मेजर करने में क्या मेजर करें, कैसे मेजर करें, तो उस समय में पहली बार जीडीपी मेजरमेंट का काम शुरू हुआ. लेट 30s अर्ली 40s के आसपास पहले मेजरमेंट्स यूएस इकॉनमी के लोगों ने कोशिश की. उसमें बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़े कि अब जैसे आप एक्टिविटी मेजर कर रहे हो, अब बहुत सारी एक्टिविटी है जो आप मतलब इम्प्यूट करते हो. जैसे यू विल फाइंड कि जैसे हाउस होल्ड रेंट है, अब क्या होगा, वो ओनर्स ऑक्यूपाइड, अगर आप खुद के घर में रह रहे हो तो उसमें रेंट को कैसे कैलकुलेट करोगे. सो देयर आर मेनी थिंग्स दैट वेयर देयर इज नो मॉनेटरी ट्रांसफर, not even transfer in kind, लेकिन फिर भी मेजर होता है. बट do you measure
the cooking of food by a housewife, right? So घर के अंदर का काम को हम लोग मेजर करेंगे नहीं. So इसमें बहुत सारा डिस्कशन हुआ. फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि घर के अंदर का जो नॉन मॉनेटरी काम है, जिसमें पैसे का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसको हम मेजर नहीं कर सकते. नहीं तो जैसे अब चाइल्ड केयर को आप कैसे मॉनिटर, मतलब हाउ डू यू फाइंड अ मेजर फॉर दैट. Those decisions are actually very important in how we have understood what is economically productive activity. जैसे अगर कोई मदर अपने बच्चों के साथ बहुत समय बिताती है, इनफैक्ट नाउ देयर आर स्टडीज शोइंग दैट द मोर टाइम अ मदर स्पेंड्स विथ हर चाइल्ड, the better the skill level and eventual productivity of that child, right? अभी तो काफ़ी deep में study हो चुका है. तो won't it be more productive for the mother to be taking care of the child and give her rewards for that? मतलब ऐसा नहीं कि घर में उसका social status कम कर दिया आपने, right? So there were many such deep discussions that started, but eventually they decided कि इसको अभी बाहर रखते हैं, इसको measure करने में problem होगी. So that was the first time that GDP calculations started. Now GDP होता क्या है, right? See, finally, if you think about it, all of human society is just about taking care of each other, right? See, finally, as a species, हम लोग अब 800 करोड़ हो गए हैं. तो इसमें सबको खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, राइट? सो रहने को घर चाहिए. बट इसको अगर स्केल करना है तो आपको फिर ट्रेडर चाहिए, क्योंकि आपको अगर इकोनॉमिक एफिशिएंसी चाहिए तो स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा. स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि आपको ट्रेड करना आना चाहिए. जैसे किसी को बाल काटना आता है, किसी को कपड़े बुनना आता है, कपड़े सिलना आता है, तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा. सो फिर वो, और जब ट्रेड होगा तो उसमें एक आदमी ट्रक चलाएगा, एक आदमी बैलगाड़ी चलाएगा, व्हाटएवर, राइट? तो इफ़ यू स्टार्ट मेजरिंग जीडीपी, दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट मूव्स. सो जैसे इंडिया की जीडीपी में 18% एग्रीकल्चर है, खेती है, राइट? उस खेती में सब लोगों को लगता है कि भाई वो, अरे मानसून खराब हो गया, एग्रीकल्चर इनकम गिर गई. लोग भूल जाते हैं कि अब जो खरीफ के क्रॉप्स जो होते हैं, जो जून जुलाई में लोग बोते हैं और अक्टूबर नवंबर में उसकी हार्वेस्टिंग होती है, उसमें वो, मतलब आप सभी सीरियल्स को ऐड कर लो, राइट? उसमें केवल राइस होता है, वीट तो रबी क्रॉप है. वीट प्लस राइस प्लस पल्सेज इज नाउ लेस देन मिल्क in terms of value of output. जैसे अब tonnage of fruits and vegetables is now bigger than the tonnage of cereals. और जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे the nature of food consumption changes, right? So agriculture के अंदर भी काफ़ी बदलाव होते हैं. So जैसे so you have agriculture at 18%. Then you have about, I would say 30%, 28-30%, which is industry. इंडस्ट्री में मेटल्स एंड माइनिंग, तो भाई आपको कोयला निकालना है, अगर आप बिजली चाहिए तो आपको कोयला चाहिए होगा. आपको स्टील बनाना है तो आयरन ओर चाहिए होगा. तो माइनिंग का एक काम हुआ, उसको मेटल में कन्वर्ट करना हो गया मैन्युफैक्चरिंग. उस मैन्युफैक्चरिंग को लेके फिर आपको अगर कार बनानी है, क्रेन्स बनानी है, ये करना है, वो करना है, वो हो गया. आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, कंस्ट्रक्शन इज अ पार्ट ऑफ इट. तो ऐसे ऐसे करके, वैसे मतलब कपड़े सिलना, ये वो, सो ऑल दैट इज मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन, और फिर सर्विसेज. अब सर्विसेज क्या है कि सपोज, एंड दैट्स व्हाट मोर लेस यू एंड आई डू, राइट? वी डोंट प्रोड्यूस फूड, वी डोंट मैन्युफैक्चर, वी ट्राई टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड ट्राई टू फाइंड वेज टू मोनेटाइज दैट. नाउ द स्टैंडर्ड सर्विसेज आर, द बिगेस्ट वंस आर रिटेल ट्रेड. जैसे दुकान खोल के बैठे हैं. सी, फाइनली दुकान खोलना बहुत ज़रूरी है. जहाँ दुकान नहीं होगी, जो एक्चुअली द लास्ट टाइम भी डिस्कस की सड़क का क्या इम्पैक्ट होता है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि दुकान खुल जाती है गांव में. नहीं तो आपको छोटी छोटी चीज़ खरीदने के लिए 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा. तो दुकान खोलना भी इज सर्विस, दैट इज कॉल्ड ट्रेड. गुड दैट यू थिंक दुकान खोलना इम्पोर्टेंट है. 15 साल से वही कर रहे हैं, ऑनलाइन स्पेस पे करते हैं. एंड दैट इज वेयर आर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इज हाईएस्ट. सो व्हेन वी गेट टू ग्रोथ, लाइक व्हाट इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, कि कैसे with the same number of people, with the same amount of capital, how do you produce more? तो इसमें the stuff that e-commerce, modern trade, these are so important, and we'll get to that. तो trade एक service हो गया, financial services एक service है, उसके बाद public administration एक service है, defense एक service है. तो वही, तो these are all ways in which we provide help to each other as a society, and there are ways and ways of measuring this. And who measures this? Like India mein, is it government's job or these independent organizations, and who measure it? How do they measure it? Do they actually assess
all production, or is it based on sampling? They get some data, tax returns, and so on, and extrapolate from that. Great question. See, the point is you cannot measure GDP. I mean, not right now anyway. Maybe 100 years later you can. AI will measure it. AI will also approximate it. It will like measure it more accurately maybe, but measure करना बहुत मुश्किल है. तो इसलिए कुछ चीजें actually measure होती हैं, कुछ चीजें sample होती हैं. Got it. So to give you two different ways of looking at it, India में अभी भी करीब 40-45% informal economy है, right? जैसे वो छोटी दुकान लेके कोई खोल के बैठा है, कोई जैसे खेती मोरलेस पूरी informal है, कोई records बहुत मुश्किल से मिलते हैं. Crop cutting experiments और ये सब होते हैं. So there is, see, remember that for the longest time, the only source of taxes for governments was agriculture. So the measurement of agriculture, at least the crop agriculture, is among the best of all industries. क्योंकि वो 200-300 साल से उससे भी पहले से कि भाई कितनी फसल हुई. अब किसान चुरा लेगा फसल तो फिर वो बताएगा ही नहीं कितनी फसल हुई, तो टैक्स क्या मिलेगा, right? Earlier the revenue of all the kings were basically all this, Yeah, from either agriculture. a cut on trade or tax on land or farm output. So there is informal agriculture, there is informal trade, there is informal construction. जैसे बहुत लोगों को ये भ्रम होता है, स्पेशली इंडिया के बाहर, अरे रियल एस्टेट साइकिल, अरे बाहर बम्बई दिल्ली आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, राइट? द पॉइंट इज, as per the 2019 housing condition survey, only 0.7% of India's houses were in buildings taller than 10 stories. 0.7%. Wow. Right? 85-90% of the houses are ground plus one. अब वो ज़्यादातर घर, you know and I know, we've all grown in small towns, कि वो तो एक बुलाया एक मिस्त्री और उसने 4 वर्कर लाए, वो ऐसे कुछ तार टांगा और उस दीवार सीधी खड़ी हो जाती है. So how do you measure that? Right? So there is a very large informal segment. इंडिया में वो 40% है. बहुत जगह पे जैसे यूएस में भी 1.5%, 2% होता है. But that generally is stuff that you want to do illegally. And people will find it amusing or scary or distasteful, but like, drug trading, drug trafficking, prostitution. तो ये सब चीज़ें भी actually economic output है. Economic, right? So, but of course they are mostly below the radar. So the economists will want to measure that. So some of the informal economy wala stuff people estimate, or that is They are currently ignored? they're estimated. So for economies which are where, like India's, where the informal economy is very large, you have periodic surveys. So every 5 to 7 years, you try to do a reasonably comprehensive survey. So there is a consumption survey कि भाई लोग अनाज कितना खाते हैं, चाय कितनी पीते हैं, वगैरह वगैरह. So there is a consumption survey. There is an enterprise survey कि भाई average दुकान की profitability क्या होती है. Of course, there is an annual survey of industries, which data comes with a 2-year lag and all that. So there is a fair degree of estimation that goes into that 40-45%. But it would be a mistake to think that the rest of the 60% or 55% is also measured accurately. So generally GDP में 3 बड़े भाग में, if you divide, it's easier to understand. So there's a private corporate. I mean, the company is a large company, like the ones that you've set up, or the ones that are listed. Then there is public sector, which is government. गवर्नमेंट में रिकॉर्ड्स होते हैं, बिकॉज टैक्स का पैसा है, ये वो जो भी आया वो तो फॉर्मल हो गया ऑटोमेटिक. और बाकी को रेसिडुअल को बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर. सो हाउस होल्ड सेक्टर इज नॉट जस्ट हाउस होल्ड्स डूइंग थिंग्स. इट इज बिकॉज यू कैन डोंट हैव अ बाउंड्री. जैसे कोई दुकान में बैठा है, कहाँ पे उसका अकाउंट शुरू हो रहा है, कहाँ पे उसके दुकान का अकाउंट शुरू हो रहा है, उसमें सेपरेशन नहीं होता, राइट? वो पैसे जो है कैश भी फंजिबल होता है, माल भी, वो भूख लगी तो वही बिस्किट खा लिया. सो दैट्स द हाउस होल्ड सेक्टर. सो एवरीथिंग इज, सो द रेसिडुअल इज कंबाइंड इनटू द हाउस होल्ड सेक्टर. नाउ फॉर द हाउस होल्ड सेक्टर, nearly everything is not possible to measure. So therefore, every 5-6 years you try to do a survey, and therefore you will see, when you see GDP data, it comes in series. जैसे अभी 2011-12 सीरीज चल रही है. 2018-19 में नई सीरीज आनी थी, बट क्या हुआ कि उस समय वो पोस्ट डिमोनेटाइजेशन काफ़ी केओस था इकॉनमी में. तो हुआ कि चलो अभी की इकॉनमी का रिजल्ट जो है ठीक है. और थोड़ा ये भी होता है ना, सर्वे में सवाल क्या पूछा आपने. जैसे एक और बड़ा सर्वे होता है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे. जैसे इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट होती है, अब किसी के पास नौकरी है नहीं है, सो यू हैव टू एस्टिमेट अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ जीडीपी. इन क्वार्टरली जीडीपी, जो अभी जैसे डिस्कशन क्वार्टरली पे हो रहा है कि सेकंड क्वार्टर का बहुत अच्छा है, एंड आई स्टिल थिंक इट इज अंडर मेजरिंग इट. आई थिंक द इकोनॉमी करंटली इज डूइंग बेटर देन व्हाट वी आर मेजरिंग. आई डोंट थिंक देयर इज एनी इवन 10-15% ऑफ द डेटा अवेलेबल which you can actually measure. So तो क्या होता है, as the time passes by,
you get multiple revisions of GDP, and this is a global phenomenon. Right. It is always measured by a government department in every country. तो इंडिया में कौन सा डिपार्टमेंट है जो measure करता CSO, Central Statistics Organization. So it is part of the MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation. है? Got it. So तो वो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है and there in India's statistics, in fact there's a whole discussion we can have on statistics, but early years, the 50s 60s, India's statistics were far superior to that of many even developed markets. But over 30-40 years, I think they've, and so abhi the quality of statistics is actually pretty bad. The structure of statistics also, remember that if you are measuring the collective output of about 18% of world population, you cannot have one person doing everything. It is much better, and you run large organization, मतलब वो ground up real data आता है तो फिर roll करके होना चाहिए. अभी वो there's too much centralization that has happened. Also remember that there are multiple revisions that happen. So जैसे quarterly GDP होगा, अभी जनवरी में एक फर्स्ट एडवांस्ड एस्टिमेट FY24 का आएगा. रिमेंबर 3 महीने का GDP अभी इकॉनमी बची हुई है, लेकिन क्योंकि सरकार को बजट प्रोजेक्शंस के लिए चाहिए, तो इसलिए उनको अभी फर्स्ट फेब इज द बजट, सो दे नीड टू हैव एन एस्टिमेट. एंड इंडिया इज नॉट यूनिक इन दैट. ऐसा नहीं है कि हम लोग ये कोई जादू कर रहे हैं, और हर कई जगह ऐसे ही होता है. कहीं कहीं पे आपको साल खत्म होने के 2 महीने पहले ही GDP एस्टिमेट आ जाएगा. देन यू हैव the first estimate, the second estimate, the final estimate comes 2 years after the year has ended. 2 years. Yeah, because that is when the annual survey of industries data, the final tax filing. So all the things that you mentioned are inputs that go into the statistical department, and then they use all of that to calculate. But even for the private corporate sector, you would think कि सब कुछ measure हो जाता है. वो कुछ 5 लाख कंपनी का डेटाबेस है, उसको MCA 21 डेटाबेस बोलते हैं. वो MCA 21 डेटाबेस में 5 लाख कंपनीज ही हैं. But actually India में, I mean, even the private corporate sector is actually much larger than that. Right. So as GDP is an estimate, but I would say that broadly it gives the right sense of travel. So if And it's the same methodology, so at least directionally, if it says ki 7.6% versus 5.5, at least the directional change is probably more. Yeah, exactly. So growth फिर भी सही होता है. दूसरा, there is an international, it's called SNA, System of National Accounts. So everyone follows that standard. Now, people have questions about the accuracy of measurement in many countries, but by and large, if you are comparing GDP across countries, there is a fair degree of comparability. Right. Not 100% comparability, but fair degree of comparability. So following one method of calculating this Got it. makes it more comparable. Right. So there is this, let's say the government department, CSO, you said it, that is a official GDP estimate, and they will also revise as in more and more data becomes available. But we also see in the news that, and World Bank has this estimate for India's GDP, or IMF has, or some other. Those are forecasts. So how do they do it? Like they look at much smaller set of data, or they will look at, see, वो तो ये looking into the future है. तो आप इस साल का डेटा ले लो कि भाई एग्रीकल्चरल इनकम इतना था, इंडस्ट्री आउटपुट इतना था, सर्विसेज आउटपुट इतना था. आपको लगता है कि अगले साल बारिश अच्छी होगी, खराब होगी, जो होगा, तो उसमें एक आउटपुट एग्रीकल्चर आउटपुट आ गया. आपको लगा ग्लोबल प्रोडक्शन इतना होगा, इंडस्ट्रियल डिमांड इंडिया में इतनी होगी, आपने ग्रोथ लगा दिया. सो द फोरकास्ट दैट दे गिव are what get published in the papers. They're not estimating GDP. Right. Because see, हमने भी मतलब once you start looking at all the inaccuracies in GDP and you start pulling your hair out कि बस ये इतना खराब क्यों है, Right. then you get tempted into कि यार चल छोड़ो यार मैं खुद ही measure कर लेता हूँ. Right. So you start to gather because you get a lot of monthly data, right? So you get or quarterly data that you get tractor sales, you get car sales, ये वो and you then try to create now digital proxies. So इतने सारे वो वेब बेस्ड जॉब इंजिन्स हैं, उनसे डेटा लिया कि एम्प्लॉयमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. बट वंस यू स्टार्ट डूइंग द सो कंबाइनिंग देम टुगेदर इनटू वन GDP measure, you realize that there is no way that you can get anywhere close to the kind of data that the government has. Got it. So, but despite all the inaccuracies, the rate of growth of GDP is a very important economic indicator about the company, how well the country is doing and what is the prospects if you extrapolate way out in future. And we'll come to that. But let's understand the number itself. So right now, as you said, I think for the recent quarter, at least estimate is 7.6%, which itself sounds very
promising, and as you said, like it's probably underestimate. Maybe it will get revised upwards. But how to process this number? From what I understand, there was a almost 20-year period where China was growing about 9 to 10%. And that has dramatically, transformed the company from a country very similar to India 30 years ago to today. It is definitely considered a developed country. Per capita income is 4 times that of India, and all of that. For us, I think we've been consistently growing 6-7%. I think from what I understand, most developed economies grow 2-3%. What is a right number for a country of India's size and India's stage of development? What number over a long period of time? And I understand it's not a given. हो सकता है अभी हो रहा हो बाद में कम हो जाए बढ़ जाए. But you as an economist, as what you want, Okay, what will you so should be that's happy with? so what you just said, I mean, is like 4 or 5 very, very big questions, right? So Time है आराम से करते हैं. no, and it's fascinating. I mean, see, it forces me to think through all of the dynamics as well. So I think the first question is, what is growth, right? What do you mean by growth? The second is, how did China manage to grow at 9-10% for so long, right? The third is there a target for us? I mean, or what should we be happy with? It's like, कि अगर मैथ्स में 90% भी ठीक है कि 95 भी ठीक है कि 100 लाना है, right? So those kind of things. So what is growth? So there are two measures of growth. One is real growth, and second is nominal growth, and I think it's very important. Sure. जैसे suppose the price of everything goes up by 5%, right? And my salary also goes up by 5%. I'm kind of sitting in the same place doing the same thing, but it's just that I'm getting 105 rupees. Right. So when I'm looking at my income at the end of the year, I will say, देखो 5% growth हो गई. That is nominal growth. Yeah. But when I say कि यार 5% सब कुछ ग्रो कर गया, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ. Correct. Right. So then what is real growth? So there is a pricing element to it. Yeah. It's called the GDP deflator. It is a mixture of what they call the consumer price index and the wholesale price index. But anyway, so what is real GDP growth? Why? How does it really change things? So again, coming back to the old measure, right? So if you split GDP into labor input, capital input, total factor productivity. So if your population is going up by 1% every year, the demand for food will go up by 1%. I mean, if you think everything happens smoothly, demand for housing will go up by 1%, demand for clothes will go up by 1%. So 1% demand growth ऐसी आ जाएगी. Correct. If you are able to provide that to everyone and everyone demand goes in the same way. So इसलिए फिर per capita GDP पे आ जाता है कि भाई आपका अगर 2% पे GDP ग्रो कर रही है और 2% पे आबादी ग्रो कर रही है तो भाई फिर आपने क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव हुई नहीं. Then comes down to say what drives per capita GDP. Now per capita GDP it's not a very accurate, but it's a reasonable measure of the quality of life, right? Because when you measure GDP, and I guess we'll get to that as well, you look at it from the income side and you look at it from the expenditure side, right? So income side पे कि आप कितना income produce कर रहे हो, inflation adjusted तरह से, right? तो जैसे and for people who work in companies, it would be that are you able to improve the profits of the company, right? So that's an easy way to think about it कि आपने अच्छे से या तो आप वियतनाम और चाइना और कहीं से compete करके कुछ अच्छी चीज़ मैन्युफैक्चर कर ली, सब लोग आपसे ही खरीद रहे हैं, या कंट्री के अंदर भी, राइट? सो थिंक अबाउट द वर्ल्ड, राइट? ऐसा थोड़ा है कि हम अर्थ से मार्स को कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं या वीनस से इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट? फाइनली अर्थ के अंदर ही वो GDP तो ग्रो कर रही है. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट वी आर लर्निंग टू डू थिंग्स बेटर. सो वी with the same amount of cropland, am I able to produce more food? As a tailor, if I was able to stitch 5 clothes, can I do 10 clothes? Right. Now, how do I do that? So that is how per capita GDP grows. So am I enabling people to produce more? Right. So one simple way to translate that is that as a individual, I am able to produce more adjusted for inflation because either I have better knowledge or better tools, sometimes even better opportunity, or some frictions goes down. Opportunities. Oh, that is the cycle management. We'll come to that. Okay. But no, these are important things. Absolutely right. So I can improve my output if I inject more capital input into it, right? So if as a food delivery person, if I'm moving on a foot, I can deliver maybe 5 packages a day. If I can do cycle, I can do 10. I can do motorcycle, I can do 20. So that's a capital input. Now the third is how well are you organized, right? And that is where
I think what you call the TFP starts to come in, meaning that जैसे दुकान ही है, right? So suppose you have 100 distributed stores, and everyone, because they're far and there is a natural process of कि कितने दिन बाद हम reorder करेंगे, तो कितनी inventory रखनी चाहिए, ट्रक जाने में कितना समय लगता है, and all that. That whole system where you have 100 diverse and distributed shops, there is a certain amount of inventory that the system needs to keep, because there is no other solution. उतना आपको inventory रखनी पड़ेगी. उसको वहाँ पे ऑर्डर शिप करने में कॉस्ट लगेगा, ये लगेगा, लोग चल के जाएंगे तो ये वो. Instead, if you bring it down to say 10 or 20, and you create distribution channels, can you organize things more efficiently, right? And that is TFP. So with the same amount of capital, with the same amount of workers, you're organizing the system much more carefully. So if you split China's GDP growth down, coming to the second part of the question, you see, वहाँ पे labor input had started to slow a while back, right? Because of the one-child policy and all that. Their labor quality was improving. So in this form of measurement, they measure it through the average number of years of education. So वहाँ पे they've dramatically changed the education quality, and which is, I think, great achievement on their part. But the biggest driver was capital injection. And then there was TFP growth. Now, TFP growth is about incentive structures, about market forces, about technology transfer, right? So कोई इंडिया से यूएस गया, यूएस में देखा कि यार ऐसे ऐसे वहाँ पे ये फैक्ट्री में चलता है, कोई यहाँ पे आया, उसने बोला ऐसे करेंगे, and suddenly the productivity goes up, right? So that's tech transfer. And so China benefited greatly. So as they attracted foreign companies to come and invest, so they got a lot of capital, and they also got a lot of expertise. Value chain integration, trust networks. जैसे हमने मान लीजिए कि बढ़िया फैक्ट्री बना के हमने प्रोडक्शन चालू कर दिया, बट बेचे कहाँ? और बेचने का भी काम जो है वो ऐसा नहीं है कि लोग हमसे खरीदने को तैयार बैठे हैं, जाकर कन्विंस करना पड़ेगा. तो जब फॉरेन कंपनीज आती हैं तो वो अपना वैल्यू चेन लेके आती हैं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चर, उनको कस्टमर तो पता है कहाँ पे. सो चाइना मैनेज दैट वेरी वेल, बट द बिगेस्ट चेंज आई थिंक वाज इन कैपिटल फॉर्मेशन. सो तो होता क्या है कि अब हर किसी के पास अगर 2-2 रुपए हैं, उसको इकट्ठा करके एक बड़ी मशीन खरीद लें अगर, और सबकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो ये सबकी भलाई है. बट सोसाइटी में वो करना बड़ा मुश्किल होता है, राइट? आई मीन इट्स लाइक वो सोसाइटी में वो हाउसिंग सोसाइटी में हर कोई अग्री नहीं करेगा कि यार कितने सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, राइट? सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो हाउ डू यू ऑर्गेनाइज? एंड देयरफॉर what China did was, for I would say 40 years, maybe more, they had almost institutionalized what we call financial repression, right? कि आप किसी को भी मतलब सेविंग्स डिप्लॉय करने का मतलब कुछ ऑप्शन ही मत दो. सो बेसिकली आप बैंक में ही डाल सकते हो सेविंग, बैंक में आपको 2% ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और उसको फिर वो सेविंग्स आ गई. अब वो बैंक्स जो हैं वो सरकारी बैंक्स हैं, वो उठा के जहाँ मन चाहे लोन दे सकते हैं. Basically, they had monopolized the savings of the entire population, and that become a very low-cost source of capital, which government can pretty much deploy however they wanted, 100%. and to whoever also. They will, I think, they have a lot of NPs also as a result, because तो क्या होता है ना, किसी जो कैपिटल का 2 फॉर्म होता है, डेट कैपिटल, इक्विटी कैपिटल. नाउ डेट कैपिटल is less risky for the saver, meaning that at least you have some guarantee कि पैसा वापस आ जाएगा और उस पर इंटरेस्ट मिलता है. इक्विटी कैपिटल can be very risky. So when you have low per capita wealth, so the reason why the US and UK and France and all of those developed over 200 years at 2% a year is that you could let that slow development of wealth happen, right? I mean, of course, it accelerated because of the industrial revolution and all that, but the capital formation was starting to pick up very slowly. What we are trying to do is do in 30 years or 40 years what they did in 200 years. So what you need is a very accelerated pace of capital formation, because आबादी तो उतने से बढ़ेगी नहीं, और नहीं टेक ट्रांसफर के कारण आप इतने जल्दी इसकी प्रोडक्ट, किसी का भी बिहेवियर चेंज होता नहीं है, राइट? सो आपको कैपिटल इंजेक्शन करना होगा. तो कैपिटल कहाँ से आएगा? और केवल डेट भर दोगे तो वो बूम बस्ट साइकिल होती है. इकोनॉमी गलती से भी थोड़ी स्लो हो गई, बिकॉज लेवरेज, एज यू नो, इज वेरी रिस्की. एंड जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, और मे बी योर ऑडियंस अंडरस्टैंड, क्या होता है कि मान लीजिए एक बिजनेस में मुझे
10% रिटर्न बनने वाला है और मेरे पास 100 रुपये है, तो मैं 100 लगाऊंगा, 10% बनेगा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे मान लीजिए 2% पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं 100 रुपये और ले लेता हूँ, तो मैं 200 हो गए, 200 का 220 हो गया, मतलब 20 रुपये बन गए मुझे, और मुझे 2 रुपये इंटरेस्ट देना पड़ा क्योंकि 100 मैंने लोन लिया था, मेरा 18% रिटर्न ऑन कैपिटल हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। तो ये बड़ा अच्छा है, बट गलती से अगर धंधे में लॉस हो गया, राइट, तो जो 10% बनना था वो बहुत जल्दी से जीरो हो जाएगा या नेगेटिव हो जाएगा। सो डेट कैन बी वेरी डेंजरस, विच इज वाई इट कॉजेज, बट इक्विटी बेस्ड इंजेक्शंस आर generally they have a lot of risk absorption capacity. Now, when you're in a poor country, which China was and India is, there is a certain pace at which you can inject equity. क्योंकि किसी के पास है ही नहीं, right? So mostly people will first want to, कोई भी मेरे से पैसे मांगेगा तो पहले तो मैं डेट ही दूंगा कि भाई मेरे पास रिस्क एपेटाइट नहीं है। सो चाइना में क्या हुआ, जो हमारे यहाँ पे भी क्रिटिसिज्म हुई थी एंड आई थिंक इट्स फुली जस्टिफाइड, दे हैड socialized losses and privatized gains. तो क्या हुआ कि आपने 2% पे सबसे पैसे ले लिए सेविंग्स अकाउंट में, सरकारी बैंक है, आपने भर भर के लोन दे दिया लोगों को, जिसका धंधा खराब हुआ क्योंकि आपने 2% पे लिया, 6% पे लेंड किया, 6% का कॉस्ट ऑफ डेट भी दुनिया के उससे कम ही था, 4% के मार्जिन में 1-2% खराब भी हुआ तो कोई बात नहीं, और जिसके पैसे बन गए वो बिलियनर बन गया, राइट, बिकॉज उसका लेवरेज में बहुत जल्दी पैसा बनता है। सो दे डिड इट एट अ कंट्री लेवल स्केल। नाउ कुछ हद तक जब हमारी बैंकिंग सिस्टम भी ज़्यादातर PSU बैंक डोमिनेटेड थी, यही साइकिल होती थी, बट हम कम्युनिस्ट और उस तरह से हमारा तो मतलब सिंगल पार्टी सिस्टम है नहीं, तो इतनी अच्छे से मैनेज नहीं होता था, और उसके कारण and this is of course unfair, right, because you are repressing a lot of people, so it's not, and so the biggest challenge for us is how do we increase capital formation, the pace of capital formation, right, and I think the easier way for us is to get foreign capital in. The problem with getting too much foreign capital in is also there are countries like Thailand जहाँ पे उन्होंने वही FDI लाया खूब कमजोर से, बट वो कंपनी से इतनी डोमिनेट हो जाती हैं कि आपका अंदर का कुछ बनता ही नहीं है, राइट। सो इट्स अ वेक्स्ड प्रॉब्लम, इट्स नॉट, वो बहुत आसान प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने की। नाउ व्हाट वी आर नाउ स्टार्टिंग टू सी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट लोकल वेल्थ स्टार्ट्स टू accumulate, द रिस्क एपेटाइट स्टार्ट्स टू डेवलप एज पीपल स्टार्ट सीइंग कि देखो यार अगर 7-7.5% पे इकोनॉमी ग्रो करने वाली है तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इक्विटी में ही बनेंगे, तो इक्विटी कैपिटल में लोग पैसे डालना शुरू करते हैं। And once enough number of people are doing that, equity capital becomes cheaper, and then the economy starts to take off. One last point I would like to make here is that there is what you would call structural growth, which is, I mean, कुछ भी structural ऐसा तो 100 साल का होता नहीं है, मतलब over a 5-7 year period or 10 year period, you see say 1 or 2% growth in labor input and say 2% growth in total factor productivity. Basically आप expertise ला रहे हैं. In fact, on this, it's important to think about जो हमारे भी global capability centers बन रहे हैं, या ये जो IT सर्विसेज का बूम हुआ उसका क्या फ़ायदा हुआ? शुरू में तो हम Y2K में और डेट चेंज कर रहे थे, बट जैसे जैसे हाई एंड सॉफ्टवेयर हमारे यहाँ आता गया और हमारी इकोसिस्टम बननी शुरू हुई, the cost of writing software in India just collapsed. And that allowed for a lot of new innovation to happen. So it takes 15-20 years. So वैसे ही ना कैपेबिलिटी सेंटर्स में भी अगर हम दुनिया भर की ऑयल ड्रिलिंग डेटा को यहाँ एनालाइज कर सकते हैं, अगर हम 40-45% ऑफ ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम एम्प्लॉयज यहाँ हैं, सब रिस्क मॉडल यहाँ बन रहे हैं, तो वो फिर वो इकोनॉमी में सीप इन होने लगता है, राइट। सो दैट एक्सपर्टीज, सो देन हमारे रिटेलर्स को बेस्ट प्रैक्टिसेस बहुत जल्दी मिल जाती हैं and all of that, right? So these are very, these things happen slowly but they're very solid. So 2% TFP growth भी ठीक है, right? Capital generally works in cycles. It is impossible, I think, very hard to do. Impossible नहीं कहना चाहिए, very hard to have a steady state process for capital injection. तो क्या होता है कि कुछ समय में, जैसे a very large part of capital formation is house purchase. जैसे for any household, the biggest purchase they make
in the life of a household is that of a house. जैसे मैंने कैलकुलेट किया था कि मेरे महीने के या साल का कितना खर्च होता है खाने में और कपड़े में, उसको मैंने 30 से गुना किया कि भाई कितना खर्चा होगा. The price of the house we live in is massively above that number, right? So roti kapda makan is the biggest expenditure, and it is a lump sum expenditure. So when someone is willing to invest in a house, it creates massive number of jobs, right? So real estate cycle जब चल रही होती है तो इकोनॉमी बूम करती है, बट रियल एस्टेट साइकिल में क्या है ना, इसीलिए इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है कि वो भेड़ चाल चलती है कि अरे वो देखो उनके भतीजे ने एक बड़ा अच्छा घर खरीद लिया, तुम तो यार 15 साल से काम कर रहे हो, तुम अभी रेंट के घर में रह रहे हो. तो फिर वो प्रेशर पे आके कोई मॉर्गेज लेके लोन कर खरीद लेगा, वो कर देगा, दाम बढ़ने शुरू होंगे, मतलब अरे देखो यार रियल एस्टेट में कितना पैसा बन रहा है लोगों का, अरे अब तो रह ही नहीं पाएंगे. सो देन वो भेड़ चाल में वो फिर बूम होती है, फिर घर के दाम बहुत बढ़ जाते हैं और उसके बाद फिर वो सस्टेन नहीं होता, फिर वो गिर जाता है. इंडिया में आपको भतीजे का देखने पड़ेगा, यूएस में तो इट हैज बीन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, अमेरिकन ड्रीम बेसिकली, यू नो, if you are an educated person at some point you have to buy a big black mansion, and that's the only way to say like now you're living American dream, and probably, you know, plays a huge role in capital formation. It does, and in the US they have a remarkable system. So because of laws passed in the 1930s, effectively the government guarantees them low mortgages for low mortgage rates for one house. वो मतलब जो Fannie Mae जो Freddie Mac का one जो of them went under also, or हाँ नहीं, फिर वो सरकारी है, तो फिर उनको फिर से bail out होता है, कि हाँ in fact big time bail out होता है. Exactly. So घर देना, see, it is about, so government भी क्या है, it's all of us. So the real estate cycles cause a lot of volatility in capital formation. And the second is again just the sheer momentum. See क्या हुआ 2003 में इंडिया में, उसके पहले पावर जनरेशन इन इंडिया, दो इट वाज अलाउड टिल 91 तक, तो पावर जनरेशन वाज अ गवर्नमेंट मोनोपोली. उसके बाद कहा कि प्राइवेट सेक्टर आ सकता है. प्राइवेट सेक्टर एक आध लोगों ने हीरो बन के पावर प्लांट चालू किए, पता चला कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें लॉस ही रहता है हमेशा, उससे चवन्नी निकालना भी मुश्किल है, तो कंपनी डूब जाती. 2003 में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट पास हुआ, इट वाज अ लैंडमार्क एक्ट, राइट? सो व्हेन दे सेड दैट अगर आपने एसईबी को बिजली बेची है तो आपको पैसे तो मिल जाएंगे, राइट? उसमें उसके बाद भी लोगों को भरोसा नहीं था कि यार ये तो लॉ वो तो ऐसे ही पास हो जाता है. कुछ लोगों ने हीरो बन के कर दिया इन्वेस्ट, उनके तोड़ के पैसे बने. एक पावर प्लांट था 2007 में जिसमें the cost of a power plant, which normally runs for 25 years, was recovered in 1.5 years. Wow. Now you can imagine what happens after that, gold rush. Right. फिर क्या हुआ कि 130 गीगावाट की पावर कैपेसिटी है इंडिया में, एक ही साथ में उस समय में थर्मल पावर, और 200 गीगावाट became under construction. Right? So you know how that story ends. फिर क्या हुआ 2010 में मैं काम कर रहा था, कोल इंडिया का कुछ IPO हो रहा था. मैंने कैलकुलेट किया, फिर मैंने बोला कि यार कोयला कहाँ से आएगा. तो मैं दिल्ली गया, मैं कोल मिनिस्ट्री से मिला, कोल सेक्रेटरी से, ये सर मेरे फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि इतना पावर प्लांट पावर कैपेसिटी लगने वाली है बट कोयला तो है नहीं. तो आई थॉट ही वुड से हाँ देखो यहाँ तुम्हारे एक्सेल में ये गड़बड़ है. मैंने कहा यही तो हम भी बोल रहे हैं पावर मिनिस्ट्री को. तो मेरी हटी कह रही बॉस ये तो बहुत गड़बड़ हो गई. तो लोग पावर प्लांट ऐसे ही खड़े कर रहे थे. मतलब सी पावर प्लांट में क्या है ना कि बहुत ट्रेन कैपेसिटी, कोयला वाला लाना पड़ता है, ऐश ले जाना पड़ता है, तो यू नीड लॉजिस्टिक्स, इवैक्यूएशन, पावर कौन निकाल, ग्रिड नहीं है. ऐसे ही कई कोने में पावर प्लांट बन रहा है. कहाँ से कोयला आएगा पता नहीं, कहाँ से पानी आएगा पता नहीं, बिजली निकलेगी कैसे पता नहीं. सो देन यू हैव अ 7-8 पीरियड ऑफ करेक्शन वेयर पावर कंपनीज गो बैंकरप्ट, बैंक्स हैव टू बुक एनपीएस. अब क्या हुआ है पिछले महीने, मतलब अक्टूबर में फिर शॉर्टेज शुरू हो गई. सो 8-10 साल से किसी ने पावर प्लांट लगाया नहीं, तो अब वो हो रहा है. अभी भी लोग डरे हुए हैं कि नहीं भाई थर्मल पावर तो नहीं लगाना अभी. वो 2 साल में वो क्या होगा ना, ऐसी पावर कैपेसिटी, पावर डिमांड ऐसे चलती है, राइट? वो लोग पीक आवर, पीक डे, पीक मंथ, गर्मी होगी तो ज़्यादा डिमांड. मार्च में फिर से गर्मी बढ़ेगी, चुनाव आ रहे होंगे, कोई पावर कट देगा नहीं, तो जो अगर मान लीजिए कि इस कैपेसिटी की सीलिंग है तो ऐसे छू के ऐसे नीचे आ गया, क्योंकि ठंडी हो गई तो एसी नहीं चल रहा है, फिर मार्च में भागेगा, फिर वो ठक 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 होने लगेगा, तो फिर सडनली जो इन्वेस्टमेंट चालू हो जाएगा. देयर इज अ cyclicality to this, and there are many sectors in it, which the same thing happens. So there is a steady state of labor input, there is a reasonably steady state of total factor productivity, and you cannot take it for granted. जैसे चाइना में 2013-14 के बाद गवर्नमेंट स्टार्ट बिकमिंग वरीड कि प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा हो गया है. So Neelkanth, from what I understood, GDP का breakdown
तीन मेजर इनपुट आज जैसा आपने बताया, एक तो पॉपुलेशन ग्रोथ, वो इंडिया में ऑलमोस्ट स्टेबलाइज हो गया, आई थिंक सब 1%, तो उससे उतना ही ग्रोथ होगा. दूसरा टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी विच इज अबाउट एफिशिएंसी, बीइंग स्मार्ट, बेटर एल्गोरिथम, एंड दैट यू आर सेइंग कि उसका अपर लिमिट ऑलमोस्ट 2-2.5% रहता है. तो बाकी 4-5% इज मोस्टली गोइंग टू कम फ्रॉम कैपिटल इन्फ्यूजन. कैपिटल कम फ्रॉम डोमेस्टिक कैपिटल. From what I understand, domestic capital is also rising significantly in India. There is a reasonable degree of foreign direct investments coming and probably going to increase. बट वो सब मिलके स्टिल मोटा मोटा वो 6-7% होता है. नाउ 7-7.5 7-7.5 अभी हो गया है, yeah, बट अगर आप हिस्टोरिकल एवरेज देखो पिछले Okay. 10-15 साल का, राइट? Okay, yeah. तो नाउ क्वेश्चन आई वाज आस्किंग कि व्हाट इज द राइट नंबर, एंड यू नो प्रॉब्ली वेरी सब्जेक्टिव, बट हाउ टू इवैल्यूएट कि इंडिया शुड एस्पायर फॉर 6% कंसिस्टेंटली, 7, 8. समटाइम पीपल गेट कैरिड अवे, चाइना ने नॉलेज किया तो हमें भी नॉलेज करना चाहिए. If we get 9-10%, nothing like it. And I think we should definitely aspire for that. But we should also be aware that, you know, it's like when you're driving a car, if you drive too fast, you can get from point A to point B very fast, but the margin of error is very low. ऐसे क्या होता है कि आपको मान लीजिए 10% पे ग्रो करना है. So a lot of the things have to come together. So what you will need is a certain pace, and if you have to sustain it, say 1-2 साल करना तो चलो कुछ भी हो जाएगा, but 10 साल सस्टेन करना है तो आपको उस पेस पे कॉलेज ग्रेजुएट्स निकलने शुरू होंगे. उस पेस पे एक सर्टेन लेवल ऑफ स्किल सेट डेवलपमेंट होगा. उस पेस पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करोगे. अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप हर जगह क्रिएट नहीं कर सकते, तो आपको जिस शहर में ग्रोथ हो रही है वहाँ पे ज़्यादा अब आप कैसे चुनोगे कि भाई वहीं पे करना है. तो 10% ग्रोथ डिलीवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को एक साथ डिलीवर करना होगा. एंड उसमें क्या होता है, एक चीज़ फिसलती है तो फिर वो कर सब कुछ गिरना शुरू हो जाता है. जैसे फिर क्या some of the components needs to build way ahead of time as well, because फैक्ट्री बनाने टाइम लगता है, रोड बनाने टाइम लगता है. Exactly. और 4 साल सिचुएशन चेंज हो गया तो आपको फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है. Exactly. In a very mild way, but these things get sorted out because structural growth है इंडिया में. कि जैसे कितने इंजीनियर चाहिए इंडिया को, तो अब क्या हुआ कि वो द डिलीवरी और द ग्रोथ ऑफ इंडियन IT सर्विसेज फर्म्स, द चैलेंज वाज हाउ डू यू डिलीवर द पीपल सप्लाई चेन. कि वो आपको 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार लोग हर साल हायर करने हैं. वो बीच में हालत हुई थी ना कि वो कई कैंपस में गए, बोला भाई इस डिपार्टमेंट के सब लोग आ जाओ. लोग कहाँ से लाओगे. और फिर क्या हुआ कि फिर सडनली कॉलेजेस स्प्राउट अप करने लगे, फिर सडनली 15-20 लाख इंजीनियर बनने लगे, और फिर वो इंडस्ट्री स्लो हो गई. अब वो बेचारे इंजीनियर अब टैक्सी चला रहे हैं. सो ये सो दिस इज इन अ वेरी माइल्ड वे, अ माइनर वे एक्सप्लेनिंग why if you target 10% growth, it can become very challenging, because then it can actually add to risks also. If you just unlock systems, and we can get to that, what that means, and allow the economy to grow in its own way. I mean, you don't drive policy to do that. It is एक आध साल के लिए हो गया तो हो गया. तो is it then fair to say कि 7-8% consistently अगर अगले 20 साल तक हो जाए, so that's more than enough for India to achieve its potential? नहीं, पोटेंशियल तो अब वो जिसकी जीती श्रद्धा. एक one way of setting that objective, like in human life also we try to set कि भाई मैं जब 60 का होऊंगा तो मुझे ऐसे ये करना है, वो करना है, होगा कि नहीं होगा समय बताएगा. So our average age will cross 40, median age will cross 40, 2053. तो 30 साल हैं हमारे पास. चाइना में अभी 37-38 है, 39 हो गया शायद, 38-39 ऐसा कुछ हो गया. जहाँ पे चाइना अभी है, हम एज वाइज 25 साल में वहाँ पहुँच जाएंगे, 30 साल में पहुंच जाएंगे. राइट. अब 40 का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब 40 इज द न्यू 30 एंड ऐसा लोग कहेंगे, बट पॉइंट इज 40 साल के बाद when the median age crosses 40, economy start to slow. So as you can imagine, for every individual, the age at which they cross, I mean the mindset when they cross 40 is very different. मतलब आप उसके बाद और बड़े से बड़े घर मतलब की ज़रूरत नहीं होती. मतलब 10 साल में तो बच्चे नहीं कॉलेज चले जाएंगे, तो फिर छोटे घर की ज़रूरत है. लोग अपना कंजम्पशन और एम्बिशन और वो सब कुछ टेम्पर करने लगते हैं. सो अगर मीडियन एज 40 हो गई है, मतलब आधे से ज़्यादा लोग जो है उस तरह से सोच रहे हैं, तो इकोनॉमी ग्रोथ को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है. सो the objective that we should set ourselves, and this is my view, I mean, different people will have different views, is that should try to at least grow rich before we
गेट ओल्ड एज अ कंट्री, क्योंकि उसके बाद भी 2-3% पे ग्रोथ होती रहेगी, 3-4% की ग्रोथ सस्टेन कर सकते हैं, बट फिर वो एक्सेलरेटेड पेस करना बड़ा मुश्किल है. I want to just understand and also underline this point. बेसिकली हम बोल रहे हैं कि अभी शायद मीडियन एज 26-27 है, शायद 28 होगी मे बी, तो अगले 30 साल में वो 28 से 40 हो जाएगी. एंड दिस इज द टाइम वेयर वी कैन मैक्सिमाइज द इकोनॉमिक ग्रोथ. करेक्ट. तो ये 30 साल की जो अपॉर्चुनिटी विंडो है काफ़ी क्रिटिकल है इन सम वेज. एब्सोल्युटली. इसमें अगर मिनिमम जो भी नंबर है 7% मान लीजिए, तो वो 30 साल कर लेंगे तो वी कैन इन सम वेज अचीव अ सर्टेन स्टेटस. उसके बाद ये 40 तो हो गई बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है, और हो जाएगा उसका मोस्ट लाइकली द ग्रोथ रेट विल कम डाउन टू 3-4%. So yeah, so it's important for us to use this period well, right? So that I would say for the country also should be an objective. Right. Now, is 7% enough? Is 8% enough? Is 9% enough? Again, their subjectivity creeps in. एक तो remember that growth, and this is where nominal GDP growth becomes important. जो हम measure करते हैं कि अभी 3.6-3.7 trillion हुआ है GDP का, तो this is a nominal number. Right, so while real GDP growth may grow at 7 to 8%, nominal will grow at 11 to 12%, possibly higher. But what also happens is if your inflation is higher, आपकी currency dollar के against depreciate करने लगती है. Right, आप फालतू का inflation बढ़ा के GDP बढ़ाओगे तो finally terms of trade में दिखेगा, आपका currency depreciate कर जाएगी. तो dollar value उतने से बढ़ता नहीं है. But inflation differential minus currency depreciation और इन्फ्लेशन रिलेटेड चेंज वर्सेस माइनस करेंसी डिप्रिसिएशन, इन दोनों को मिला के फिर भी 1-2% का गेन हो सकता है. मतलब डॉलर टर्म्स में हम लोग अगर 7 पे 7.5 पे ग्रो कर रहे हैं तो 9% के आसपास ग्रो कर सकते हैं. मुझे लगता है कि अगर 10-10.5 कर लें तो द लाइकलीहुड ऑफ बिकमिंग एन अपर मिडिल इनकम कंट्री इन 2053 इज वेरी हाई. एक और पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, एंड आई थिंक यू वांट टेल मी इफ माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट. दिस रियल जीडीपी ग्रोथ वर्सेस नॉमिनल. So now let's say inflation on average 4-5% हो रहा है और GDP ग्रोथ रियल टर्म्स में 6-7% हो रही है, तो मिला के 11-12 हो गया. तो अगर अभी हम 3.5 ट्रिलियन डॉलर पे हैं तो अगले साल 11-12% करेंगे तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा 4 ट्रिलियन हो गया. राइट, when the reported when we say कि as a country we have achieved 4 trillion, the real growth तो उसमें सिर्फ 7% हुई है. तो we are at compared to today we will be at 3.75 3.8, बट वो इन्फ्लेशन की वजह से रिपोर्टेड नंबर इन नॉमिनल टर्म्स. So the headline number is always nominal number, which means no. So no, headline number is always nominal number. That is correct. But मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरह सोचना कि नहीं हमने तो 3.6 का इतने ही बढ़े हैं, but वो ऐसे होता नहीं है. See, finally जो भी per capita analysis होती है, जो GDP के size की analysis होती है, वो हमेशा nominal terms में होती है. Okay, so nominal also important in many ways. It's not an optical number. It is. No, it is. It is not just an optical number. All I'm saying is कि अगर आप इन्फ्लेशन बढ़ा के अपना नॉमिनल जीडीपी बढ़ाओगे खाली तो करेंसी डिप्रिशिएट हो जाएगी और डॉलर वैल्यू में आपका वो ग्रोथ नहीं होगा. तो और क्या होता है कि ना हम लोग वो सी एवरीथिंग इन लाइफ इज रिलेटिव. इफ यू थिंक अबाउट इट, द एवरेज लोअर मिडिल क्लास पर्सन टुडे इन इंडिया परहैप्स हैज अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देन द फ्रेंच नोबल इन द 18th century. राइट, मतलब जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि यूएस में भी 1920s तक सिटी में सीवेज सिस्टम्स नहीं होते थे, रनिंग पाइप वाटर नहीं होता था, सेंट्रल हीटिंग नहीं होती थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था बहुत जगह, फेसबुक भी नहीं था. I don't know if that is adding to quality of life or taking away from it, but but you know, but those are separate things. We just but did a whole episode on digital minimalism, so at least I am very clear where I am on that. But no, I agree. So but it's all relative, right? So ये assume करके चलना कि अगर हम $20,000 पर कैपिटा पे पहुंच जाएं अगर, तो अभी के हालात में हम लोग मे बी अपर मिडिल इनकम तक पहुंच जाएंगे. So I think that is a reasonable what I want to clarify, you know, अभी देखो ये $20 ट्रिलियन या $25 ट्रिलियन का नैरेटिव इज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड लॉट ऑफ पीपल हु वॉच दिस एपिसोड वो सम थोड़े मैथ वाले होते हैं, वो कैलकुलेटर निकाल के 1.07 raised to power 20 कैलकुलेट करते हैं. But the right way to calculate is not 1.07, 1.11 raised to power 20. Correct. And that changes number. I think with that, if my math is correct, somewhere around 2040, we should cross close to $20 trillion, something like that, you know. Yeah. तो see, and ये जो है ना, ये arithmetic है, तो इसको as you were saying, उसको डिबेट करके कोई ज़्यादा फायदा नहीं है. नहीं फायदा नहीं, बच्चे को ये तो जस्ट एस्टिमेट करने के 20 ट्रिलियन कब पहुंचेगा. हाँ 20 ट्रिलियन ठीक है, बट वो उसमें आपको यूएस डॉलर मतलब USD INR भी लेना पड़ेगा. अगर आप क्या बोली इन्फ्लेशन बढ़ा के अगर कर लोगे, जैसे कि यूएस में अभी तो खैर यूएस की भी
प्रॉब्लम अलग है, वो अभी दे नीड हाई इन्फ्लेशन टू सस्टेन देयर डेट, तो USD INR का चेंज भी अलग होगा. बट व्हेन वी आर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आई थिंक इट्स अ रीजनेबल नंबर टू वर्क विद, कि अगर आज को हम $20,000 की पर कैपिटा GDP मतलब आज के हिसाब से अगर हो तो हमारी रैंकिंग कहाँ होगी. सो रिमेंबर दैट चाइना अभी भी ग्लोबल रैंकिंग्स में 70-80 पे है पर कैपिटा GDP में. So the size and the heft we will have, right? We could be the second largest economy in the world or whatever, third largest. But the average लोगों का wealth है, goodwill है, life expectancy है, quality of life है, वो हम दे पा रहे हैं कि नहीं. So from that perspective, I don't think 7% real growth is good enough. It is I think a level we can sustain. So ये वो होता है ना, वो 60 पे गाड़ी चला रहे हैं कि भाई मतलब एक्सीडेंट का रिस्क कम है, हम लोग पहुंच जाएंगे. बट मेरे हिसाब से थोड़ा एम्बिशन और बढ़ाना चाहिए, एंड वी शुड एस्पायर फॉर फास्टर ग्रोथ. फास्टर मीन 8 साढ़े 8. हाँ, आर्ट के ऊपर मतलब आर्ट इज अ रीजनेबल नंबर टू. इस क्वार्टर तो लगता है हो जाएगा भले. I think where I would agree with you is that this has to be managed with every 3-5 years. I think one of the biggest risks I see, and thankfully most people in policy making today are also of that mindset. ये हम जो ये 25 साल 30 साल का वो अभी जैसे एक फोरकास्टर ने 2072 का GDP पब्लिश कर दिया है. It is very dangerous. See, even China had to reform or take tough decisions every 5-7 years. Every 5-7 years, you have to keep making change. And it cannot be कि बस अब ये 5 साल हो गए, चलो अगले 5 साल बाद करते हैं. मतलब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ होते रहना पड़ेगा. बिकॉज जब तक आप वो बॉटलनेक्स हटाओगे नहीं, वो रीऑर्गेनाइजेशन नहीं करते रहोगे, तब तक में वो ग्रोथ कहाँ से आएगी. समझ गया. आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसका गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर रहेगा कि यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड. यू नीड टू बी बोल्ड. Yes. Take major reforms. Yes. Reforms will not please everyone. Now in 100%. a populist democracy, in some way, how do you manage that? Yeah. Probably use first 3 years of government Correct. to take those other bold reforms. Otherwise, at some point, this will start to taper off, and it's very difficult to change the momentum. Yes, and जो 2011-12 में होने लगा था, राइट. सो 11-12 में क्या हुआ था कि मतलब एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ गई थी कि भाई हम तो 7-8% में. ऐसे नहीं होता है. इट्स वेरी हार्ड. एंड बैलेंस शीट्स हैड स्टार्टेड डिटेरियोरेटिंग. गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग वे टू मच. इट वाज स्टार्टिंग टू क्राउड आउट द प्राइवेट सेक्टर. ऊपर में बहुत लेवल की चोरी हो रही थी. तो अब क्या हुआ कि अब जब करप्शन स्कैंडल्स निकलने शुरू हुए तो सरकार और प्राइवेट सेक्टर के बीच में डिस्ट्रस्ट आ गया. तो नो सेक्रेटरी इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी सीन क्लोज टू. तो फिर क्या होता है कि फिर तब आप तो सी फाइन, एवरीवन हैज टू वर्क टुगेदर. प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सिटीजन, एवरीवन हैज टू वर्क टुगेदर. तो वो ट्रस्ट मेंटेन करना है और एक्सेसेस नहीं करने हैं. जैसे इफ इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी स्टार्ट्स टू गो अप, हमारी तो डेमोक्रेसी है, वो तुरंत पलट जाएगा. राइट. सो देन एंड द नेक्स्ट रेजिम दैट कम्स विल नो कि भाई हमें सत्ता इसलिए दी गई है कि आप इस इनइक्वालिटी को कम कीजिए. तो फिर वो करेक्शन में चला जाएगा. सो and as a democracy, I think we have to expect that we will have 5, 7, 10-year periods where growth will struggle, where we are trying to address the social inequities. And therefore, whenever we have the opportunity, जैसे अभी opportunity है, लोग चीन से भागना चाहते हैं. अब वो कहाँ आना चाहते हैं वो तो खैर उन पे. तो हम लोग इंडिया ला सकते हैं कि नहीं. जैसे अभी भी चाइना के 3-3.25 ट्रिलियन डॉलर्स में से $1 ट्रिलियन अभी भी मल्टीनेशनल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं चाइना में एक्सपोर्ट के लिए. सो दिस इज प्रोडक्शन हैपनिंग इन चाइना फॉर एक्सपोर्ट. नाउ मेनी ऑफ देम आर वेरी अनहैप्पी विथ द पॉलिसीज ऑफ द चाइनीज गवर्नमेंट कि अब वो शी जिनपिंग थॉट याद कीजिए और कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी बैठा होगा. तो ये सब देखे वो भागना चाहते हैं. वो भागे कहाँ. तो हमारे पास ये 2-3 साल का विंडो है जब हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं. जब वो आएंगे तो कैपिटल लेके आएंगे, वैल्यू चेन लिंकेजेस लेके आएंगे, और it can accelerate our integration into global value chains, and accelerate our productivity growths in goods manufacturing. So every time we get this opportunity, we have to be at it. Right. And similarly, and this is where we I think ended the last time, that we have to manage our cities better. So there are so many challenges that we need to address. See, even 10 years later,
अगर हम 7-8% पे भी ग्रो करते रहे, वी विल स्टिल बी अ लोअर मिडिल इनकम. फिर भी इफ यू लुक एट द स्नैपशॉट ऑफ इंडिया, it will look nasty. Correct. So there will always be big problems to solve, Right. and we have to keep at it. So नीलकंठ, ये दोनों एस्पेक्ट, तो चाइना में आई थिंक पॉलिसीज चेंज हो रही हैं एंड लॉट ऑफ द फॉरेन कंपनीज आर जिटरी एंड सो ऑन, सो चाइना प्लस वन, राइट. वो आई थिंक अगले एपिसोड में ओवरऑल होल जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड में काफी उसका डिटेल में बात करेंगे. सेम फॉर द inclusive growth also brought up. Is coming back to GDP. I want you to help us visualize this. Just I want to go back to this my simple math. मान लो कि नॉमिनल ग्रोथ 11-12% में हो जाएगी मोटा मोटा, एंड उससे आई थिंक 2040 के आसपास विल बी क्लोज टू $20 trillion इन डॉलर टर्म्स. रफली हर 7 साल में 11-12% में डबल हो जाता है. correct, 4 ट्रिलियन से इतना 1-2 साल ऊपर नीचे. जो हेल्प अस विजुअलाइज कि अभी हम 3.5-4 ट्रिलियन हैं, उससे 20 ट्रिलियन पे जाएंगे. पर कैपिटा GDP उस वक्त आई थिंक पॉपुलेशन शायद 1.6 बिलियन होगी, तो $12,000 हो जाएगा कंपेयर टू अभी $2,500 है. What does it mean? And this is 15-16 साल is not a huge time. I've seen it. मेरे को इंडिया वापस आए US से 15 साल हो गए, तो 15 साल और भी हो जाएंगे, राइट. हम दोनों कॉलेज से ग्रेजुएट हुए, कितने 26 साल हो गए. तो हेल्प अस विजुअलाइज कि इसका मतलब क्या है कि 4 ट्रिलियन से $20 ट्रिलियन अगले 15-16 साल में बन जाएगा. अपॉर्चुनिटी वाइज अभी हम lot of developed countries, or reasonably developed countries are at $10,000, per capita. China is I think around 12,000 है उनका, right, something like that. तो help us visualize कि उस वक्त इंडिया कैसा दिखेगा. Like understand, थोड़े चैलेंज होंगे inclusive growth में, but still, going from 2,500 to 12,000 is a very big deal. That is correct. I think वो इतनी जल्दी 12,000 नहीं पहुंचेंगे, but it is a reasonable question कि 12,000 पे हुए तो क्या हो जाएगा. So there will be a lot of things that we then start taking for granted. So for example, China में आज rural households में भी refrigerator and washing machine penetration is 85-90%, right? ये हमारे लिए अभी unimaginable है. But अगर हम इस स्पेस पे ग्रो किए तो मतलब 15 साल तो कम लगता है, मुझे लगता है 20-22 साल में मेरे ख्याल से वहां तक पहुंच जाएंगे. कार्स का पेनिट्रेशन क्या होगा, लोग छुट्टियां कितनी लेंगे, हाउ मच विल दे स्पेंड ऑन हॉलीडेज, हाउ इंटीग्रेटेड विल वी बी विद द वर्ल्ड. In the sense that if you see now in large parts of the world, there are shopping complexes which are sort of geared towards Chinese buyers. जो 70s 80s में Japanese buyers के लिए होते थे. Now it is possible that in 15-20 years time there will be large tourist destinations which are focused on Indian tourists. So there will be a lot more of flying that will happen. So basically क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, you start valuing your time a bit more, because then you are spending more on leisure, right? So in 20 years time, the new generation, the kind of stuff that you are also supporting, the new generation of sports people will have been born in the last 5 years, getting extremely high quality nutrition, much healthier, getting the right kind of training, starting to play tennis today. And so I think India's stature will be much bigger. We'll still, I guess, be finding reasons to be unhappy, but it'll be a happier stage. I find it mind-boggling. अभी यूएस में शायद 25-26 ट्रिलियन डॉलर है, चाइना 19-20 के आसपास होगा, राइट. एंड जापान, जर्मनी आई थिंक 4-5 इन दैट रेंज में है. अगले जो भी आई थिंक देखो 11-12% हो रहा है, तो अगले 17-18 साल में हो जाएगा 20. चलो मान लो 20 साल भी लगते हैं. 11-12 नॉमिनल हो रहा है ना. हाँ, बट उसमें अगर उतनी इन्फ्लेशन रही तो इन सो आई वुड से the dollar terms it will be more like 8-9%. Fair enough. So what real terms में थोड़ा ज़्यादा लगेगा. That's why I was but nominal not real. See, there is real, there is nominal, and there is something in between, which is what I would call PPP adjusted. Understood. There is a purchasing power parity adjustment, which is not that complicated. Basically that जैसे क्या है, अभी इंडिया में टैक्सी राइड किसी को लेनी है तो 18 से 20 रुपया किलोमीटर, अभी पता नहीं क्या रेट है, बट उसी आसपास में वो मिल जाएगी. आप यूएस में करो तो आपको $4 या भी $18, $10-12 में मिलेगी, तो $1,000 हो गया. तो अब ये कहना कि इंडिया की जीडीपी यूएस से इतनी छोटी है, जबकि आप टैक्सी राइड को 20 रुपये किलोमीटर पे आप मेजर कर रहे हो, तो इज रॉन्ग. So there is this called purchasing power parity adjustment. Purchasing power parity adjustment, we are already the third largest economy in the world. The PPP adjustment is perhaps the most realistic measure of quality of life of the citizen, right? So that would grow at, if you grow at real terms 7, maybe at 9%. Understood. तो वो 7 साल की जगह पे 8-9 साल में डबल होगा. 9% में मतलब 8-9 साल में डबल हो जाता है. Yes. But even with that, not
So 20 साल में 20 ट्रिलियन उस ग्रोथ से भी हो जाएगा, which is puts us today where Japan or Germany is, at least as an aggregate. I understand per capita different होगा, and see even if per capita incomes are relatively lower, but let's say country का defense budget will be percentage of GDP, a lot of infrastructure will be a percentage of that, and this is all going to have like people who are 20-year-old today, they will be only 40-year-old at time. Is nothing, and 40 is very young. I think we are on the wrong side of 40, but I feel pretty young, right? Yeah, correct. So I think that is unimaginable amount of growth, that opportunity ahead of us. Not just that, what that will also do is that you will have Indian brands everywhere. Right. You will have Indian R&D. In fact, I would put it as a I would call that interdependent issue, that in order to get there, we also need to start aspiring to control product, to control technology, not control, but to be owning and developing technology. Right. तो जैसे अभी Xiaomi and Oppo and Vivo are global brands. We need to have global brands. It's not just that we will have global brands. Because see, if India itself, if you think about it, becomes a $20 trillion economy and the world GDP, say at that time is whatever, 180 trillion, we will be 10-11%. We are today 3.5%. Right? So which will mean that every large company will be interested in coming here, and there will be many Indian companies which would have become global companies. And when we're discussing geopolitics, that's another issue that to think about, that this is the best projection of soft power, that you have Indian companies spreading out, because the Indian market becomes so large that the Indian companies can then invest in developing products, developing technology, which then becomes useful for people abroad. So I would see it as a much more interconnected, I read that there are 20,000 people who fly between China and Japan every day. Every day. Right? So जैसे अभी direct flights हैं. I mean, a common friend of ours was saying, and you know who it is, कि वो बहुत आ रहे हो यार आजकल. So he said, look, it's now a 16-hour direct flight. And so Europe is 10 hours. Right. So it is longer, but it does not feel that far. Yeah. And so having those, so there will be more such flight connections, it will be easier to travel abroad. So lots of things will change. And I think generally, and that's what we should aspire for. I think we should also aspire for, and what we will see is that, maternal mortality will be lower, infant mortality will be lower. We'll have more money to spend on those things. And what this means is, and from a quality perspective, see, as they say, to go from 96% quality to 99% quality requires 8x investment. It doesn't require 2x investment. And we will be able to afford that. We will start valuing human life a lot more, because abhi to वैसे ही नहीं है. Right. So that is what I would see it as, that we have much greater pride. Yeah. We have much greater familiarity with the world, because our brands are everywhere, and we are much more interconnected, and we have much greater respect for human life, and we have better quality of life for a large number of people. One last point here. See, in the averages, we tend to miss out, because averages can be very misleading. And see, even today, if you divide India into 3 parts: formal sector, formal employee; formal sector, informal employee; and informal sector, informal employee. Right? Because formal sector में भी informal employees होते हैं, मतलब वो कुछ करते हैं, वो workforce में नहीं है, permanent job नहीं है. Formal sector, formal employee, we are already comparable to upper middle income countries, which is why most engineers, most professionals, their quality of life would not be very different today. Now, 20 years back, वो said वो अंतर था. But अभी बड़े शहरों में, most people are leading lives which are not very different from what they would be within the West. The reason why the averages are being brought down is that you have a state of Bihar with a per capita GDP of $700. And that is worth repeating. And look, in the business context, I have to use this phrase here: average mat dekho, distribution dekho. Yes. Like top 10 percentile ko last 10 karo, because that's where the reality is hiding. Now this, we say per capita income or GDP of India is $2,500, but Bihar being $700, a dramatic difference. Bihar is probably similar to sub-Sahara Africa, I think, if I'm not mistaken. It is. What is even more shocking is that if you have this chart where I plot the spread of per capita GDP across district domestic product. So there is a spread for Maharashtra, there is a spread for Bihar, right? It is like this.
So what that means is बिहार that का लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट का 400 पे होगा. वो तो और कम है, and the poorest districts of Bihar of Maharashtra are worse off than the richest districts of Bihar. There is massive diversity in Maharashtra also. Right. So the moment you step out of Mumbai, Pune, Nagpur, Aurangabad, Nashik, 5 or 6 big cities, it's disaster. तो थोड़ा इसके बारे में और बात करते हैं ना कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज अब तक हमने जो डिस्कस किया सारा एवरेज पे ही कर रहे थे बट इंडिया इज ऑब्वियसली वेरी डाइवर्स कंट्री द कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सो ऑन जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी एंड एथनिक डाइवर्सिटी बट लॉट ऑफ इकोनॉमिक डाइवर्सिटी एज वेल. Yes. तो उसको कौन मैनेज कर रहा है नाउ वी हैव द फेडरल सिस्टम central government looks after in some ways the whole country but then different states have different governments different policies and so on different history different baggage that they may carry. I mean not be easy to change that turn. I don't know if you look at do we look at the GDP growth of individual states as Yes, well yes. and especially poorer states unless they are going faster than the overall the average of the country they will never catch up. So what is the general dynamic that's playing out? It is very complicated. So there are attempts being made now. And so in the last 10 years, I've seen a lot more sort of awareness of state level dynamics. So let's start with the construct. As per the Constitution of India, as you would expect the design to happen, most of the subjects that are in control of the center are things that require national scale. So external affairs, defense, currency, banking, एयरलाइंस राइट. सो इसमें आप स्टेट कंट्रोल दे नहीं सकते. बट जो भी चीज़ें ग्राउंड अप इम्पॉर्टेंट हैं, हेल्थ, एजुकेशन, लैंड, लेबर, एनवायरनमेंट, all of urban management, all of these gram panchayat, I mean, all of these are state subjects. Now there is very little that the center can directly do in control agriculture, right? So agriculture is also a state subject. So it's very little that the center can do directly. And in a way, that is the way the constitution has been designed. And India has always been very hard to administer from one place. And you would expect, right? 18% of world population. Now, एक आदमी तो एक थोड़ी टीम बैठ के decide कर लेगी. So there is by design a lot of diversity. Or maybe the design reflects a lot of diversity. Now, the biggest debate then is there convergence happening or not, right? And as you can imagine, there are cycles. So people, if they cherry pick, they will say that and there are, political parties who seem to be flagging the fact that, dekho, it's actually diverging, that the richer states are getting richer, poorer states are getting poorer, or not growing as fast. But if you pick the right data points, you can actually prove the opposite also, right? So it suffices to say that there is diversity in growth. For example, if you look at UP today, per capita GDP of about $1,100, so not very rich, but absolutely dramatic change. So in terms of the ground level infrastructure, the commitment of industry to invest there. It is also benefiting. In fact, a large part of UP, it's about 1,100. It's because, Noida, Ghaziabad are benefiting from being close to Delhi. Yeah. If you remove that, maybe it is actually closer to Bihar. But the pace of change is very visible. Yeah. In Bihar, we had a period, after 2006, 2005 actually, where law and order was being put in place, and highways were getting built, electricity has now reached every place. But unfortunately, I think the focus on getting industry in, on building services hubs and all of that has actually not happened. Even food processing, Bihar has a lot of fertile land, has not happened. So when you go down at a state level, there are different dynamics, right? So industry share of GDP in Tamil Nadu is closer to that of China. So agriculture is very, very less. I mean, it's much less important. And there can be a whole new episode on why different states are where they are. But I would say that the development of a state is a lot more in control of the chief minister of that state than of the center. Got it. Why isn't there more debate and public data about state-wise GDP? जैसे अभी I did not know कि बिहार का per capita GDP $700, UP का $1,100. News sometime we hear कि UP में
chief minister has the goal of making UP a $1 trillion economy. But that so today UP's GDP must be about 300 billion, 260 to 70. 260, right? तो उसका 4 गुना होने के लिए सेम अगर 9-10% ग्रो करना पड़ेगा, then UP need to match the pace of GDP growth of China over last 20 years. Yeah, and then the state has to ask and answer the same questions. And so while they were setting their $1 trillion target, this was the discussion that was happening with some of them. I was involved in as well. That if you're going from 250 to 1,000, $750 billion of additional GDP, even if you assume 25% ROC, you need $3 trillion of investment. 750 billion into 4. अब $3 trillion ना राज्य सरकार के पास हैं ना केंद्र सरकार के पास हैं, तो लाएगी तो प्राइवेट सेक्टर ही. So government then has to transition from being a doer to being a facilitator. कि भाई हमें नहीं करना, हमें facilitate करना है, हमें प्राइवेट सेक्टर को बोल के लाना पड़ेगा. And I think that mindset change you will see has happened much faster in the southern and the coastal states. So जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा, तो इन जगहों पे the state governments have become a lot more savvy. Partly because they are coastal, so उनका वो थोड़ा opened up system ही है. This whole belt was actually at some point, because when agriculture was the dominant force and trade and manufacturing was not, these were the dominant areas. Old castles and old forts and all that. And जैसे जैसे industry और services पे dependent हुआ वो ही नहीं. So I think the debate has to go there. Unfortunately, it does not. I have been trying for at least I would say the last 10-12 years. In fact, 2011 में I wrote about fresh horses for the economy, that some of the interior states are starting to do better. So MP has done a lot better. Okay. Odisha is doing very well. Assam is now starting to pick up. Do you have any states? Are any states able to grow at 9-10% in real terms? So there are states which have managed to grow, but for a certain period, and then they slip. So जैसे बिहार भी, but of course from a ridiculously low level. There was a time when it was growing at 10-12%. So there are times, जैसे अभी जैसे अगर cyclical recovery services में होती है, और Karnataka is able to meet the supply side. When a large part of global capability centers and all of that will develop there. But one thing, I don't know, maybe I'm too simplistic right now, but in general, dialogue around each state talking about their GDP growth rate and almost like a competition among states, and that becomes a bragging right for a chief minister that under my role, this last 5 years we managed to grow at 9-10%, we're beating national average. That's probably at least creates a clear metric to gun for and brag and maybe win elections. So again, like most things in India, you can sense the change if you're looking out for it. So the fact that you've not perceived it yet is because it is not the agenda on which elections are won and lost. But अब देखो, मतलब अखबारों में, वो बम्बई के अखबार में कितने सारे स्टेट्स का वो ऐड निकलता है कि डिलीवर्ड दिस, डिलीवर्ड दैट, इतना केपेक्स हुआ, सारे इन्वेस्टर्स बॉम्बे में है. हाँ, सो एग्जैक्टली, आई एम अज्यूमिंग दैट इसलिए यहाँ कर रहे हैं. और कोई वजह हो नहीं सकती है, एक्चुअली हो भी सकती है, बट द पॉइंट इज अब हर स्टेट जो है वो थोड़ा कहीं पे वो हर कोई कर रहा है तो हम भी करेंगे वाला जुमला भी हो जाता है. बट इन्वेस्टमेंट समिट करना, लोगों से बात करना, रोड शोज पे जाना. इनफैक्ट अब क्या हुआ है कि हर फॉरेन एम्बेसी, आई मीन यू विल बी सरप्राइज्ड, मे बी जियोपॉलिटिक्स का डिस्कशन है, बट देयर आर एम्बेसडर्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज इन इंडिया जिनका ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने कितने से एक्सपोर्ट उस कंट्री का इंडिया में ग्रो कराया. मैं एक बार एक यूएस एम्बेसडर से बात कर रहा था, वो इसी के बारे में बात कर रहे थे कि देखिए हमने इतना डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट कराया, हमने इतना आर्म्स का कॉन्ट्रैक्ट कराया, हमने ये कराया, हमने वो कराया. उनका टारगेट होता है. इन द लास्ट 5-7 years वी हैव स्टार्टेड सीइंग दैट हैपन, और एम्बेसीज को टारगेट दिया कि कितने स्टेट्स का आपने रोड शो कराया. सी फाइनली कोई अगर कंपनी इंडिया आएगी इन्वेस्ट करने को, वो स्टेट गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करती है. मतलब स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए, क्योंकि ज़मीन तो वो देगी.
क्लियरेंसेज, लेबर, ये सब तो पूरा करना होगा. जैसे आई वाज हियरिंग अबाउट यूपी, वन लार्ज कंपनी काफ़ी इन्वेस्ट किया, एंड फैक्ट्री इनॉग्रेशन कुछ 6-8 महीने में था. तो चीफ मिनिस्टर से बात हुई, तो उन्होंने कहा भाई क्या समस्या है. तो हाँ, कुछ 2-3 चीज़ें बात हुई. इसमें एक बड़ी चीज़ बताई कि देखिए यहाँ पे हम महिलाओं को जॉब देना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो 7 बजे के बाद लॉ ही अलाउ नहीं करता कि वो कंपेयर. तो कब आपकी फैक्ट्री कब शुरू हो रही है? 6 महीने. ठीक है, हो जाएगा. एंड इट वॉज अलाउड, राइट. सो अब ये चीज़ तो केंद्र सरकार कुछ कर ही नहीं सकती इसमें, तो ये तो राज्य सरकार को करना है. एंड द मोमेंट यू सी मोर ऑफ दी स्टोरीज कमिंग थ्रू, कि जैसे कहीं पे कि भाई अब हम 12 घंटे की शिफ्ट करेंगे. अगर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में वो 12 घंटे की शिफ्ट होती है, आपको उसी में वियतनाम और कंबोडिया और चाइना से कम्पीट करना है, तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी. सो आई थिंक दैट नैरेटिव इज चेंजिंग. परहैप्स इट नीड्स टू चेंज फास्टर. जैसे फॉक्सकॉन किस स्टेट में गया, किस स्टेट में नहीं गया. आई वाज सो हैप्पी टू सी कि उस पर पॉलिटिक्स हो रही थी, कि फॉक्सकॉन हमसे इतनी देर तक बात कर रहा था, वो वहाँ क्यों चला गया. Okay, Neelkanth, let's go back to GDP growth rate. As we discussed earlier, कि जो 7-8% growth करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है कैपिटल डिप्लॉयमेंट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्रोथ कम्स फ्रॉम देयर. तो अभी इंडिया में हम लोग रफली $3.5 ट्रिलियन पे हैं. 8-9% का मतलब हर साल $300 बिलियन एंड एक्सीलरेटिंग. तो उतनी ग्रोथ करने के लिए कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए, और उसके सोर्स कहाँ से, कितना गवर्नमेंट कर सकती है, कितना डोमेस्टिक लेगा, कितना फॉरेन कंट्री से आने की ज़रूरत है. एंड आई एम गेसिंग it needs to accelerate in the coming years. Must have been much bigger for China over last 20 years. So overall, what's the right way to look at this? No, it's a great way to think about it. एक वो आईकॉर बोलते हैं कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, कि भाई आपको तो जैसे इंडिया में ये रेशियो को 4 मान के चलते हैं, कि अगर आपका सो एज आई वाज सेइंग अर्लियर, वो there is an expenditure side to GDP. So there is private final consumption expenditure, government final, then there is GFCF, gross fixed capital formation, and then there is exports minus import, X minus M कहते हैं. So India में GFCF जो है वो पीक पे हमारा कुछ 37-38 भी पहुंच गया था, मतलब 10-12 साल पहले. अभी वो ठीक से बढ़ना शुरू हुआ है, राइट. तो बीच में 25-26 हो गया था, अभी वो 27-28 पे आ गया. अगर आईकॉर 4 है, तो अगर 28% ऑफ GDP आपका GFCF है, यानी इन्वेस्टमेंट्स है, तो आपका 7% ग्रोथ को वो फाइनेंस कर सकता है. नाउ वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट इज दैट, और इसीलिए वो जो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का और इन्वेस्टमेंट का जो मिक्स लेके चलते हैं, सी देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू, विच इज दैट अगर आप कुछ ज़्यादा कैपेक्स कर दोगे तो वो कंज्यूम कौन करेगा. अगर आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगोगे तो बहुत जल्दी इन्फ्लेशन आ जाएगा, आप इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे हो फ्यूचर के लिए. इन अ वे, इफ यू थिंक अबाउट इट हाउस होल्ड लेवल, while you are doing something for today and you're consuming, you're also saving for the future or investing for the future, right? Yeah. So there is a healthy mix. And so in China it has gone to the other extreme. I mean, they have been at 40-45%, sometimes 50% of GDP of actually activity is just investment. तो वो कुछ अति भी आप कर सकते हैं. कहने का मतलब कि अगर आपने सड़क बना दी, होटल बना दिया, बिल्डिंग बना दी, अब क्या है कि आपका बनाने समय तो उसमें एक्टिविटी लगती है, राइट. तो आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी या कोई, तो उस वक्त GDP ग्रोथ हो जाएगी. बट अगर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो तो एसेट लॉस मेकिंग हो गया. अब वो एसेट लॉस मेकिंग हो गया तो वो लॉस किसी को बेयर करना पड़ेगा. सो इट हैज टू बी सस्टेनेबल. एंड चाइना में जो घोस्ट टाउन वाले जो दिखते हैं इमेजेस, वो वही है कि वो बना के रख दिया अपार्टमेंट, अब कोई हाँ, तो जब बन रहा था तो लगा था कि GDP बहुत ग्रो हो रही है, और अब कोई यूज करने वाला नहीं है, तो वो जिसने खरीदा है उसको तो लॉस लेना पड़ेगा ना. करेक्ट. वैसे ही वो अपेरेंटली नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे एक बड़ा इमिग्रेशन सेंटर है, वहाँ पे एक आदमी इमिग्रेट नहीं करता वहाँ से. मतलब जो भी, मतलब वो उस बॉर्डर पे कोई ट्रैफिक ही नहीं है. एक बड़ा फ्लाईओवर है जो वहाँ लैंड करता है, उस पर कोई गाड़ी नहीं चलती. सो इस तरह के ब्रिजेस टू नो बहुत हैं. तो एनीवे, सो दैट्स अ प्रॉब्लम, एंड दिस इज अ नोन प्रॉब्लम आई थिंक इन चाइना में. इंडिया में व्हाट दैट मीन्स इज दैट हमारा अभी इफ यू टेक 30% ऑफ GDP, करीब $1 ट्रिलियन का ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, राइट. वो हो रहा है अभी हर साल.
हो रहा है, मतलब that's the number, right? So about, I would say 1/4 of that, it varies from year to year, it comes from the government, public sector, state government and central government. तो मेरे हिसाब से करीब उसका 40-45% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. इस 23 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट बजट 10 लाख करोड़ का है, तो 125 बिलियन के आसपास है, तो उतना उसके आसपास है. और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे बनाती है, रेलवे लाइंस में एक्सपेंशन होता है, एयरपोर्ट्स बनते हैं, वो हर घर नल से जल और ये सब वो सब होता है. फिर बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट करती हैं. तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अर्बन इंफ्रा में बनाती हैं, जैसे बम्बई में अभी मेट्रो रेल और ये सब चल रहा है. हर शहर में, इनफैक्ट दैट्स अनदर रिमार्केबल चेंज दैट इज हैपनिंग. हर शहर में मतलब हर बड़े शहर में मेट्रो रेल लग रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट के पिक्स करती है, स्टेट हाईवेज बनाती है, ऑल ऑफ दैट. करीब मेरे हिसाब से 35-40% जो है वो प्राइवेट कॉर्पोरेट केपेक्स होता है. एक्चुअली मे बी 30-35% प्राइवेट कॉर्पोरेट केपेक्स होता है. ये बहुत सिक्लिकल होता है, ये भी बहुत सिक्लिकल होता है. और दूसरा वाला जो हाउस होल्ड है वो भी. तो सेंट्रल गवर्नमेंट केपेक्स एंड स्टेट गवर्नमेंट केपेक्स इज ए सर्टन केडेंस टू इट विच इज़ वेरी स्टेबल. वो चेंज भी होता है तो 4-5 साल के साइकिल में चेंज होता है, मतलब बहुत, क्योंकि उसमें सरकार को फंडिंग की प्रॉब्लम जनरली होती नहीं है. बट अगर वो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होती है कि वो प्लान बन गया बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है. Real estate cycles, which is mostly household capex, and private corporate spending is generally quite a bit more volatile. So this is how it is spent. So the private corporate will spend or the corporates will spend on software, which is also in the form of investment. Yeah. And remember that when we think about investment, we have to think about tangible and intangible investment. Right. जो आजकल दुनिया में, and you worked in tech, you know a large part of the assets are intangible. जैसे एप्पल के बाद एक भी फैक्ट्री नहीं है, बट 3 ट्रिलियन कंपनी है. सो तो उनके तो वो इंटेंजिबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, ब्रांड्स एंड सप्लाई चेन नेटवर्क्स एंड ऑल दैट, आईपी एंड ऑल दैट. तो वो क्रिएट करते हैं. सो इंडिया में भी अभी 25-30% ऑफ द कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट इज एक्चुअली, आई वुड से, जस्ट CRM टूल्स, सॉफ्टवेयर एंड ऑल दैट. फिर वो फैक्ट्री बनाते हैं और उस तरह की कैपेसिटीज बनती हैं. उसमें जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर, ये वो जैसे वो पावर प्लांट्स, स्टील कंपनीज, स्टील प्लांट्स, ये सब वेरी कैपिटल इंटेंसिव. एंड देन देयर इज रूटीन स्टफ, ऑटोमेशन, मोर एनवायरमेंटल कंप्लायंस, मोर ग्रीन एनर्जी यूज एंड ऑल दैट. वो सब एक अलग होता है. एंड दिस कंपनीज, दिस प्राइवेट कंपनी इन्वेस्टमेंट जो आप बोल रहे हो 30-35%, मतलब 300-350 बिलियन डॉलर्स, व्हाट परसेंटेज इज कम्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज और डिपेंड ऑन फॉरेन? बहुत छोटा है. सो इफ यू लुक एट FDI ऑन एन एनुअल बेसिस, इट इज, आई वुड से, नेट बेसिस. सी देयर इज, or maybe we should look at gross in this one, would be $60 billion or so. Okay, that's it. Yeah. So but usme bhi it includes private equity and venture capital investments, and some of that is not necessarily factory building. It is still building of assets only, hopefully, not just discounts that are being given for building sort of whatever customer base. But then the remaining is household capex. Remember that this also includes, and this will be funny, but like cow is capex. Of course. Right? It's a plant which converts grass into milk. Right. Yeah. So it is considered as a capital asset. So Just I'm curious कि कितना, let's say that मुझे नंबर याद नहीं है, बट इंडिया में बहुत गाय हैं. आई थिंक गाय और भैंस मिला के मेरे ख्याल से 20-21 करोड़. बहुत it's a large number. it's a very large number, and actually that's interesting. So $1,000 तो होती हुई कॉस्ट. हाँ, आई थिंक 80,000 1 लाख तो गाड़ी होती है. जो अच्छी गाय, अच्छी भैंस होती है वो और महंगी होती है. 200 मिलियन to 1,000 हो गया, तो मतलब कुछ तो गलत कर रहा हूँ. नहीं 1,60,000 करोड़ मतलब ठीक ठाक नंबर है. सी 20 करोड़ इंटू 80,000, और नहीं तो 1,600 करोड़ हो जाता है. 1,600,000 करोड़. 200 करोड़ 200 बिलियन हो गया. बट हर साल थोड़ा, हर साल नहीं, मतलब हर साल उसका मान लो 1/10 भी होता है तो $20 बिलियन का कैपेक्स होता है. ये मैथ मैंने पूरी साइकिल की थी कि एक समय में. हाँ, आई थिंक एवरेज भैंस और गाय जो है 14-15 साल जीती हैं.
I think about 2 साल के बाद they become productive, Right. and I think they have 8 or 9 births, and after that then तो they अगर हाँ 10-12 साल का साइकिल मान के चले तो 20 बिलियन में होता होगा कैपेक्स. हाँ हाँ तो वो तो वही उतना 20 बिलियन मतलब उसमें जाता है. So that's quite a bit. Everything counts. Everything Lot of counts, things right? goes into 18% agriculture I know. economy. So of So course, they do, and it needs, say, agriculture needs a lot of investment, right? So you need you need tractors, you need whatever, and all the farm automation stuff that needs to So I happen. think what I'm getting is कि India is able to अच्छा, so generate then, lot of cap. हाँ. yeah. So then the question is कि ठीक है, ये तो इससे deploy हो रहा है, correct. पैसा कहाँ से आ रहा है, right? इसमें equity कितना है, debt कितना है. So जैसे bank level debt या मतलब financial system से जो debt मिलता है, so if you think about aggregate credit growth of say 14-15%, so बीच में बहुत slow हो गया था, but because credit demand गिर गया था, तो I would say that bank level credit, which only finances the private corporate capex and the household, would be about 20 lakh crores, right? So $250 billion हाँ, $250 billion on annual basis. हाँ, मतलब तो वो उतना होगा. और फिर थोड़ा वो FDI से आता है जो बाहर से आता है, थोड़ा accruals, equity accruals. Yeah. So that's how broadly it gets funded. So at this stage, where our banks are, see, and this is where the magic of money creation is so powerful, that banks can create money out of thin air, so long as they are well capitalized. Well capitalized का मतलब होता है कि उनका एक equity होती है, equity base होता है, और जैसे ही बैंक किसी को लोन देता है, money create हो जाता है. Right? I mean, it's a whole different. बहुत कॉम्प्लेक्स बात को बहुत सिंपली बोल रहा हूँ. आई थिंक दिस होल एपिसोड इटसेल्फ कि बैंक मनी कैसे क्रिएट करते हैं और हाँ but अभी पार कर देते नहीं तो 1 घंटा और लग जाएगा. exactly. So the banks are reasonably well capitalized, so they can create the money. अगर लोन डिमांड आएगी तो वो प्रोवाइड कर सकते हैं. Correct. अभी कंपनीज का भी इक्विटी बेस सफिशिएंट है. सी होता क्या है कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं इक्विटी लगा सकता हूँ, तो the amount of debt I can put on top of that to amplify my returns can be also equivalent or higher, right? Now, when I am risk averse, I will be less willing to take on debt. Yeah. But there will come a time when I can. Yeah. And this is where I think it's very important when we think about GDP growth, we also think we think about the balance sheet or the state of the body. जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैंने अभी एक मैराथन दौड़ा हुआ है, माई एबिलिटी टू रन, वैसे मैंने आज तक हाफ मैराथन के आगे मैं गया नहीं हूँ, वो मुकरी दौड़ता है मैराथन, बट एक और दौड़ने की क्षमता तो एकदम ही नहीं होगी, राइट? बट अगर मैं अच्छे से खा पी के सो के वेल हाइड्रेटेड उठाऊँ तो मैं थोड़ा 20 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ. तो वैसे इकॉनमी में भी यही होता है. सो 2012 में हमारी इकॉनमिक ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, बट बैलेंस शीट की हालत ख़राब थी. तो बैंक्स का लेवरेज बढ़ा हुआ था, कंपनीज ने बहुत ज़्यादा लोन लिया हुआ था, सरकार फिस्कल डेफिसिट बढ़ाई हुई थी, हम लोग डॉलर मांग के करंट अकाउंट डेफिसिट फंड कर रहे थे. सो दैट मीन्स दैट द ग्रोथ इज नॉट सस्टेनेबल. अभी क्या है, क्योंकि हम लोग 7-8 साल से खाली डीलेवरेजिंग कर रहे हैं, तो अभी बॉडी एकदम फ्रेश है, सब लोग वेल कैपिटलाइज हैं. तो अगर अभी कैपिटल फॉर्मेशन इज एक्चुअली नॉट अ प्रॉब्लम. अभी राइट नाउ डिमांड इज अ प्रॉब्लम. डिमांड इज नॉट अ प्रॉब्लम, मीनिंग as you were discussing, पावर सेक्टर में अब हालत हो गई फिर से पावर कैपेसिटी चाहिए. तो अभी भी लोग रिलक्टेंट है कि भाई अब कोल बेस्ड पावर कैपेसिटी कैसे लगाएं, ये अभी तो अनफैशनेबल है वो. तो बट होगा क्या कि अभी 6-8 महीने और कैपेसिटी कम होगी, एक आध बार लगेगा लोगों को कि अरे 10 रुपये में पावर बिक रही है, तो लगेगा अरे उसका तो देखो एक ही साल में बहुत पैसा बन गया, तो फिर लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे. फिर क्या होगा कि लोगों को लगेगा कि अरे 4 लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया, उनका बहुत पैसा बन गया, बट हमारे पास तो पैसे नहीं, चलो धार लेके कर लेते हैं, तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाती है. That's how the cycle plays out. Got it. So Neelkanth, I think looks like all the stars are aligned in some way, right? Very stable government, with all the deleveraging and very healthy balance sheets and so on. Capital formation is saying not a problem. Obviously, very young demographic. 27, 28 year median age and so on. What can go wrong? Like if next 10 years, if let's say we are talking a very optimistic rosy scenario कि यार 6-7% हो रहा है, but हमें तो और भी ज़्यादा चाहिए, 8-9 कैसे हो सकता है,
But what can bring it down to back to 4-5%? Which will Then the it math will can- go for a toss. वो आराम से see we are very capable of shooting ourselves in the foot. So the first is that macroeconomic stability, predictability. अगर मुझे 5-7 साल की पर्सपेक्टिव है कि भाई अभी इन्फ्लेशन ब्रॉडली यहाँ पे होगा क्योंकि सरकार फोकस्ड है उस पर या आरबीआई फोकस्ड है उस पर, फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो यानी कि जो भी पैसा आ रहा है उसको क्राउडिंग आउट बोलते हैं, सेविंग्स आर 100, उसमें सरकारी 60 ले लेगी तो फिर बाकी के लिए बचा ही नहीं, तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाते हैं. बट अभी क्या है कि अगर सरकार एटलीस्ट ट्राई कर रही है कि फिस्कल डेफिसिट कम हो तो वो भी अच्छा है. अगर सरकार कम खर्च करती है, फिस्कल डेफिसिट अगर कंट्रोल में रहता है, तो हमारा करंट अकाउंट जो एक्सटर्नल बैलेंस है, करंट अकाउंट इस क्या है, जैसे एज ए कंट्री अगर हम 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं और 120 कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें $20 का करंट अकाउंट डेफिसिट है. अगर हम 120 प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 कंज्यूम, तो 20 का सरप्लस है, हमारा डेफिसिट होता है नॉर्मली. वैसे वो भी 3-4 साल में उसका सरप्लस हो जाए, बट अभी तो डेफिसिट है, तो उसके लिए हमें $20 कहीं बाहर से लाने पड़ेंगे. तो जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ा रहता है तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ा रहता है, और उस कारण से आर डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन कैपिटल गोज अप, करेंसी वॉलेटिलिटी आ जाती है. तो अभी क्या है कि प्रेडिक्टेबिलिटी है. अगर हमने प्रेडिक्टेबिलिटी कम कर दी, जैसे अभी टेम्पटेशन होता है, बिकॉज सरकार कोई भी बनता है ना, तो वो अदर प्लेयर्स, अदर पीपल्स मनी है, टैक्स पेयर का पैसा है, तो बन गए राजा, बोला कि भाई देखो हम ये फ्री में बस राइड दे रहे हैं, फ्री में पावर दे रहे हैं, फ्री में ये आपको हम गारंटीड पेंशन दे देंगे. तो इससे क्या होता है कि फिर वो फिस्कल स्पेंडिंग बढ़ गई, वो पैसा कहाँ से आएगा, सेवर्स तो उतने ही है. तो सो दैट देन स्टार्ट्स टू स्लो द इकोनॉमी डाउन. शुरू में इट विल बिकम अ स्टिमुलस, 2-3 साल ग्रोथ होगी, उसके बाद फिर वो इंस्टेबिलिटी, हाई इन्फ्लेशन, ये सब आना शुरू हो जाता है. आई थिंक द सेकंड प्रॉब्लम इज दैट वी शुडंट इवन बी थिंकिंग अबाउट 10 years. तो वी हैव टू लर्न टू मैनेज साइकिल्स. जैसे रियल एस्टेट है, अभी क्या है कि 10 साल से घर बिके नहीं थे, बहुत लोगों को घर चाहिए, अब अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव हो गई है क्योंकि प्राइसेस वर फ्लैट फॉर मेनी ईयर्स, अब लोग खरीद रहे हैं, अब इन्वेंट्री कम हो गई, तो अब घर बनाने हैं, विच इज व्हेन जीडीपी इज बीइंग सपोर्टेड, राइट, सीमेंट डिमांड बढ़ रहा है वो. बट इफ वी कांट ऐड सप्लाई फास्ट इनफ, prices will start going up again. Right. So in real estate, we should be having volume-driven cycles, not price-driven cycles. Which is easy for me to prescribe, but ऐसा होता नहीं है, वो फाइनली प्राइस भी आएगा ऊपर. बट उसको अगर हम लोग डीले कर पाएँ, so that we can develop, and होता क्या है कि जिस शहर में, I was shocked, अभी कोई एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें I was shocked, सैन फ्रांसिस्को, जहाँ पे रियल एस्टेट प्राइसेस आर द मोस्ट atrocious in the world, it takes some 678 days to get approval for a real estate project. मैंने कहा ये तो हमारे यहाँ से भी खराब है. Right? So if we cannot relax that supply fast enough, we will again, that cycle will get derailed. If we cannot reform our power distribution, meaning कि अभी क्या है कि डंडा मार के जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उनकी बैलेंस शीट को क्लीन किया गया है कि अब वो फिर से पावर खरीद सकती है. अभी अगर फिर से हमने वो फ्री पावर और इंडस्ट्री को ये सब्सिडी और ये वो कर के, या फिर फार्म सब्सिडी, फार्म पावर सब्सिडी, ये सब देना शुरू कर दिया, ऐसे भी फिर लॉस मेकिंग हो जाएंगे, उनके पास पावर खरीदने की क्षमता ही नहीं होगी. अब बना की कैपेसिटी बना क्या करोगे. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टू बी मैनेज्ड फॉर अस टू सस्टेन दिस साइकिल. So and same, like if we are today at 54 lakh software engineers, I think in 10 years time we will have 1 crore software engineers in India. There are 75% of the software engineers are in 4 cities. If will these cities double? So अगर हम वो फिर से वही हो जाएगा कि वो सिल्क बोर्ड से इलेक्ट्रॉनिक सिटी में 2 घंटे लग रहे हैं. So I think that, so we have to manage the supply behind all of this. We have to manage it proactively. So we have to do all of this to sustain the growth. No, amazing. I think so. The picture that emerging for me, Neelkanth, is that one is we are in a very privileged situation. Yes. I think a lot of factors have come together where we can really aspire for next 30 years of growth. But I understand that it needs to be managed over 5 or 6 cycles, and each cycle will bring its own challenges and so on. It's far from given. Yes. But we have an opportunity, potential है, but guarantee नहीं है. Absolutely. And as you said, like we can shoot external factor भी हो सकते हैं. We may shoot ourselves in the foot. So I think it's anyone who is in a position of power, influence, policy making,
needs to really take full advantage of the situation because ये शायद 500 साल के बाद ऐसा environment create हुआ है, right? Correct. The country has gone through a lot, but I mean there is a genuine cause for optimism, Yes. and what it will translate into improvement in the people situation in life, opportunities is going to be unprecedented. ऐसा मतलब पहले कभी देखा नहीं है. Like you know, all the country we grew up in versus what's ahead of us is incredible. And one big overhang is just larger geopolitics. I think next episode में उसमें detail बात करते हैं कि geopolitics से क्या असर पड़ सकता है, positively also, negatively also. Correct. But I think I learned a lot about GDP कि exactly कैसे calculate करते हैं, real versus nominal versus purchasing power parity adjusted, the diversity of national averages versus the distribution across states and so on. So thanks for that. I think hopefully people find it super helpful and look forward to talking about geopolitics next week. Same here. At Sparks, we aim to bring to you stories of exponential impact. We share in-depth analysis of what goes behind success stories. If you find our conversations interesting, you can join us by subscribing to our YouTube channel. You can also listen to Sparks on Spotify, Apple Podcast, or any other audio platform of your choice. If you have any suggestions on who we should invite or what topics we need to cover, just let us know in the comments. We are always listening, looking for ways to improve, and keep getting better as we go along.